I hope please type in yes if you are there in a WhatsApp group, no if you are not there in a WhatsApp group. Just make sure that you are there, right? If you're not, then we'll share a link with you guys. All right, so you'll get the meeting recording and everything in the WhatsApp group only. Right, and make sure throughout the presentation, I have taken your rights to unmute yourself now. So we'll be talking about a lot of things and so on. Meanwhile, make sure that you are responding to the post. You need to be present, guys. So we are looking beyond therapy. जो पेरेंट्स का एक सवाल मुझे समझ में आया, क्या थेरेपी ABA, XYZ, etc. थेरेपी सिक्योर, थेरेपी ये, थेरेपी वो, थेरेपी. Forget about all of this for some time. I'm not saying therapy do not help. They definitely do help. But is therapy a solution? The answer is a clear and a big no. There are so many things that we know now beyond therapy, and there are so many things that that your child sort of, it's pretty much his or her right to exercise or get an access to potentially. अगर आपका financial सामर्थ्य है तो जरूर आपको कुछ और चीजें बच्चे के लिए करनी चाहिए. So let's begin the session. My name is Ayush. I'll be your host tonight. I'm one of the co-founding members of a firm called Yellow Squash. Yellow Squash is an aggregation platform. हम लोग अलग-अलग chronic conditions के जिनके modern medicine में या traditional कह सकते हैं, एलोपैथी में कोई solution दिखाई नहीं दे रहे हैं. केवल management के लिए या time pass ही. We do run an NGO also, जिसमें therapies वगैरह कराई जाती हैं and so on. So basically, with all due respect to people who are therapists in the session, etc., they do help. Therapies do help, but they are not a solution. So therapy के beyond हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ये focus रहेगा. Autism में, ADHD में, yes, you can get a full cure. That's a possibility. But there are so many things that need to be done, and the journey is hard and very long. So diet does play a very strong role. Environmental situation plays a very strong role. There are so many things that play a very strong role. There are many of the internal therapies which are required. Internal, not external. External, बाहर से training, OT, PT, ये वो सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about, can you do something to stimulate neural growth? उसकी भी importance है और वो बहुत important है आपकी बच्चे की recovery के लिए. So we'll talk about all of those things also. We'll primarily be talking about how to develop cognitive ability and capacity of your child to eventually start getting mingled with the society and start becoming independent over a period. So kya wo sambhav hai? The answer is yes. Yes, Aparna, we'll be sharing the recording after the session in the WhatsApp group. Yeah, fair, Anjan. You can share the invite. Those of you who are here for just knowledge and things like that, I would implore you, I would request you कि आप एक मैं छोटा सा message आप लोगों के साथ में group chat में share कर रहा हूँ. Please share this message to people or parents you know of who are having a troubled child so that they can benefit. उनको join कराइए ताकि उनको benefit मिल सके. So I'll share the results of the poll. Only 70% of you have responded. आधे लोग कह रहे हैं कि ऑटिज्म या ASD का शिकायत है आपके बच्चे को. ADHD is around 1/3, so a very large percentage. Behavioral issues and so on. तो ये जो सारे, सबसे पहले ये समझें कि ऑटिज्म क्या है. Does anybody have a definition of what autism is? अगर कोई टाइप करना चाहे तो प्लीज टाइप इन द डेफिनेशन ऑफ ऑटिज्म. ऑटिज्म को डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है और उसका कारण भी ये आप लोगों के सामने पोल शेयर किया है. दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, सो यू कैन रिलेट टू. इफ योर चाइल्ड इज हैविंग सर्टेन इश्यूज, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु आर फेसिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो गिल्ट में नहीं रहना है और किसी भी तरह की एपैथी में नहीं रहना है, अपने प्रति भी और बच्चे के प्रति भी. So this is a situation which many people are facing. Now another question which I want to throw to you guys is, what are you doing about this? अगर आपको ये situation है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? Yeah, Kavita, you can extend this link to your students and their parents so that they can also benefit. And we do have an educational program for educators, so stay tuned towards the end so you can also benefit.
जैसा मैं देख रहा हूँ responses से neurodevelopmental disorders. So yes, we'll primarily be talking about that. So एक सवाल और आप लोगों से पूछूंगा, इसका जवाब yes or no में दीजिएगा. ज्यादातर बच्चों के साथ में हमने ये पाया है कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक की उम्र तक their progress has been normal and then there is a decline. Those of you who agree with this or who have faced something similar, please type in yes. Those who have faced a situation wherein the child by birth day 1 से ही कुछ दिक्कत रही है, please type in no. Both these situations could be addressed, by the way. Hypoxia की situation होती है, premature birth होती है, cesarean के समय में कोई दिक्कत आई होती है, all of those situation can also be dealt with. Right? So everyone is typing in yes, but there are very few yeses. आप लोग present रहो इसमें involve रहना है आपको session में. So I'm going to share a small little experience with you. कुछ पेरेंट्स के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. That will give the start to the presentation. So please listen into this. The things which has been prescribed, but I have been giving the medicine, the supplements which were prescribed for him. The drastic improvement I could see in him is the language, the communication, because before he was not able to, I mean, okay, to a certain extent he could speak many things, but right now he can speak, and even he has he could speak only our mother tongue, that is Manipuri, but now he is speaking in English as well as Hindi also. And in the language, because he started arguing also, like if I say something, then he will reply back, and argument in the sense that replying back, that if he doesn't want that, he'll keep on arguing. So this is a kind of improvement I can see. So in terms of language, I see a drastic improvement in him. So overall, I'll say that it has been a very useful session we had, because many things which we did not know, we came to know of it. And so in the long run, if we continue doing this, I hope that the improvement will be gradual. And since it has been happening since a long time, I don't think that it can be corrected all of a sudden. Every child is unique. इम्प्रूवमेंट्स फर्स्ट तो ये है कि अगर अभी क्या है इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट थिंग ये है कि सपोज पहले क्या था, कुछ रिस्पांस नहीं मिलता था. सपोज कुछ सामान लाने के लिए हम लोगों ने बोला ब्रिंग दिस, वो कुछ भी रिस्पांस नहीं देती थी. अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट बोल सकते 20%. सेकंड ये है कि पहले सोशल इंटरेक्शन उसका कुछ भी नहीं था. बच्चा लोग खेल रहा है, इवन दो दे आर इन देयर होम, ओके, वो कुछ भी रिस्पांस नहीं करते थे. अभी थोड़ा है कि एक दो से थोड़ा सा उसका टच हुआ है, एक दो बंदे से बच्चे से उसका टच हुआ. सो यू कैन डे में एक बार खाती है, बाकी टाइम commands with him, imitation practices with him. It's all improving. It's just that I see improvement in the gut balance. Earlier he was highly constipated, but now he has improved a lot. His digestion has improved, diet has improved, hyperactivity is controlled, the response has increased. So these are the various things that I have seen. For bringing out this wonderful program, and we would say that we are benefited with this program, and my son is considerably have improved from past. Everything, his bowel movements and his hand clapping has came down. Hyperactivity has came down, and his digestion is also very good, better than before. So इम्प्रूवमेंट दिखता है. वो स्लीपिंग का प्रॉब्लम बहुत पूरा सॉल्व हो गया है. और कि इसका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया है, जो मतलब इसको डेली बेसिस पे मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ना, वो चीज मेरे लिए बहुत ही का. तो अदर सेक्टर मतलब जो अभी मैं यही कहूंगी कि आप लोगों का जो ये सबसे बेस्ट पॉइंट था, मतलब बच्चों को लेके कि जिस चीज की बच्चे में डेफिशिएंसी है या जिस भी प्रॉब्लम की वजह से बच्चा
ऑटिस्टिक हो गया है या फिर ADHD का प्रॉब्लम है बच्चे में जिस चीज की कमी है उसको रूल आउट किया जाए। तो अच्छी लगी। कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा रहा। He has improved a lot. Even earlier he didn't like to study at all. Nowadays he is very eager to do his maths and all other things. For the last couple of months, there is an improvement. How much improvement? Overall aspect, I would say 20 to 30%. So that's what is trained. IGA was like 11:15. Now communicating with them, he or she. But one fine day, he started hopping since last week. So that you and will start referring other friends. Dr. Ashwini sir told, those were very attracting to me. And next, take him to he's completely mute. Now he started words. And next one, he used to pass 3 times tools every day. Now he's passing only single time. That one is improvement. He used to be lethargic, sir. Now he is active. The only objective to show you all of this was just one, to help you understand ये problems आती हैं. Forget about the labels. ADHD दिया गया है, ASD दिया गया है या whatever it is, none of that matters क्योंकि ये लेवल जीवन भर lifetime में बच्चे के बदलते रहते हैं. I'm speaking from experience because my brother is also autistic. Now he's quite old. एक age का भी factor रहता है. After a certain age, we cannot help the person to a large extent. So it is important that we try and start as early as we potentially can. Whether it is communicability or speech or doing maths, for example, पढ़ाई के बारे में जैसे बड़े पेरेंट्स का होता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो वहीं ध्यान रहता है कि पढ़ाई रहे. तो we will talk about all of those things. So to begin with, let's start with what we are going to speak about. So just give me a second here. All right. Okay. So we are talking about functional medicine approach for autism. How many of you are aware of what functional medicine is? Please type in yes if you are aware. No if you are not. If you want to know about what functional medicine is. Okay. All right. So you want to know about what functional medicine is. I'll just play a very small little video for you guys. तो एक छोटा सा प्रयास करते हैं आप लोगों को फंक्शनल मेडिसिन के ऊपर एक्सपोज करने के लिए. Okay, we'll do this towards the later part of the session. So abhi Dr. Ashwini is there with us. So let's start with the thing. So basically, when you are into any kind of developmental disarray for the child, then you are shown 2 doors. आपको 2 रास्ते दिखाई जाते हैं. एक आप किसी तरह का ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथ, आयुर्वेद. there is absolutely no evidence. There could be some beautiful, capable people who individually might have, but there is nothing which is evidence-based, which is proof-based that there is some solution. So allopathy या किसी भी तरह का treatment का solution medicine-based, the door is pretty much shut. The second option is therapies, जिसके सब लोगों को therapies suggest करी जाती हैं. या therapies में problem वही है जो मैं आप लोगों को indicate कर रहा था. Your child is not a robot, he is a human being. He needs to develop as a human being. It's not just that you need to train him in a certain way, but you need to grow him as a normal, actual person, and you need to give him the real hope of becoming a complete person. Your child is expected, he's born to be real, he's born to be capable, he's born to be full in himself. So Dr. Ashwini is putting in a lot of effort towards this. So we have developed a very unique program. So such a program is not available as far as we know. Globally, there is no such program which comprehensively looks into the root causes of why the conditions happen and would take into all aspects possible. We'll talk about that towards the later part of our session.
wherein the child could be held. So Dr. Ashwini deals with a lot of different ailments, but child intellectual disorders is one of his key focus areas. So he is an author, he is an educator, and he's also an allopathic doctor, and he has specialization in functional medicine. He spent a sizable amount of time. This is our 6th batch for autism and developmental disorders. So we have run 5 batches previously, and somewhere around 150, 160 odd parents who have been with us. And the experiences that you have seen a little while back, जो आपने testimonials देखे थे, वो तकरीबन 1-1.5 महीने के उनके experience के अंदर है. That's the kind of difference in 1.5, 2 months of practicing you can have in your child. So it does have a certain level of speed in and progress. So without further delay, I would want to welcome Dr. Ashwini. Sir, please take over and guide us further. Thank you, Ish. Thank you so much for. Okay. So thank you so much for giving the opportunity so I can share my thoughts and what I know, and probably it will be helpful to other parents. So just a little bit about myself. So we work with autoimmune conditions, metabolic disorders, GI disorders, and of course, child intellectual disabilities. Now, to have a healthy body, all of us to have a healthy body, we need these systems to in place. And when these systems are out of place, this is where the disease starts. And this is also the case with all these kids. Most of, like Ayush has been telling, many a times, 80 to 85% of the cases we see that when these are reported by the parents, the child was born normal. They were doing well, the development goals were going well. And some event has happened, probably vaccination, probably fever, probably antibiotic shot, something that has led to the problem. And then this is where the child started regressing. Okay. Now, most of the time, parents were informed that autism, ADHD, ASD is a genetic disorder. Okay. When you think it is a genetic disorder, genetics you cannot change. Certainly, you cannot fix them. That's a mentality. That's the information you are being given. That sets a very negative tone, and you do things but not in the right direction. But actually, fact of the matter, when the child was born normal, they were doing the normal activity to a certain age, and certain event has led to the problem. That means it was not a genetic problem. So as per the data, also 80 to 85% of the cases, these children don't have a genetic anomalies. Of course, a few snips here and there could be possible, but largely it's a problem of epigenetics. Epigenetics means the factors which control the manifestation of the genes. तो जेनेटिक मेकअप तो फिक्स रहता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, उसका आउटकम को हम चेंज कर सकते हैं. अभी आपके बच्चे का एक आउटकम है, कोई डायग्नोसिस है, कोई सिम्टम्स है, बट अगर उसका एनवायरनमेंट जो उस जीन्स के ऊपर पड़ रहा है उसको हम चेंज करेंगे तो आउटकम जो सिम्टम्स है, ट्रबल है, धीरे धीरे कम हो सकता है. So this is called epigenetic science, the factors which influence the genes. And these factors are modifiable factors. You can change these factors, you can improve these factors, and thereby you can help your child get better. So please come out of this thought process that it's a genetic problem and you cannot do anything about it. You can do a lot of things for your kids. So agar ab 30, 40 years, 50 years back, if you look at it, probably hardly one child in 2000, 3000 would have such a problem. Now, almost one child in 150, 200 is getting diagnosed with such an issue. Now, the prevalence of the problem is just rampant. More and more kids are being diagnosed with the problem. Also, there's no evidence to say that human genome have changed or genetics has changed. Now, if genetics has not changed, number of people, number of kids suffering from the condition is increasing. So what is that is causing the trouble? It cannot be genetic because it has remained the same. So the prevalence just based on the genetics cannot increase. There is no change in the genetics. So certainly there are epigenetic factors which influence the genes that are leading to the manifestation of the problem. So this is a very, very powerful thought for parents. Please make sure you get that in a deeper sense. Now, second thing that
Of course, the symptoms are from the brain. They all brain related symptoms. Okay. But it is not a brain disorder per se. It is a bodily disorder. It's a whole body disorder. Okay. So if we have to make their life better, their symptoms better, we don't have to only focus on the brain. We have to focus on their body. We have to make their body healthy, their GI system healthy, their immune system healthy, their metabolism healthy, the detox pathways healthy. Then only the brain can function. So these are two very powerful thoughts you should understand. One is, it is not just purely a genetic problem. Second, it is not just a brain disorder, it is a bodily problem. And yes, you can do a lot of things to solve it. Now, if you look at it, there are multiple issues. Probably some of them are listed here and some of them not. But apart from the typical behaviors of hypersensitivity, poor communication, poor socialization or repetitive behavior or stereotypical behavior, there are also things associated with it, which is allergies or gut issues. They warm head, multiple other issues also. So these are not a coincidence that these kids largely have a stomach issue or these kids have poor nutrition. So gut issue and poor nutrition or the toxins in the body will lead to the problem. Okay. So it is not just a coincidence. And then as we start improving these systems in their body, their brain, their cognitive abilities can improve, and it improves in most of the kids. So you don't have to just focus on the brain improvement. You have to focus on the bodily improvement. As that happens, this is where the magic happens. So just to put things into again perspective, what I said, genes load the gun, but environment pulls the trigger. The epigenetic factors, they pull the trigger. Okay, probably somebody can have a little milder genes, a little weaker genes, but that does not mean that a problem should manifest. As long as the environment is good. Now, the moment the environment within the body and outside the body becomes poor, this is where the trigger comes. This is where the problem starts. So to have a healthy body, like I said, we need to have a healthy immune system, healthy gut function, also a good detoxification system within the body. Our body is able to detox as long as it has the right raw materials and right functions happening. If body is not able to detox, amount of toxins will start accumulating and will start troubling the mitochondrial function. This is where the trouble starts. So all of you parents, always wondering, why did my child have a problem? What did happen that my child has to suffer this such a nasty problem? So there are always cause and effect. There's always a reason behind the problem. All we need to try to find out, what is the reason behind your child, what is causing him to have some symptoms, and if we fix those reasons, the symptoms can slowly get away. All right. So I have listed few of the reasons, but there can be more beyond that. But these are very, very important, and they produce a lot of outcome when we fix these problems. So one is oxidative stress. The amount of oxidation has increased, probably because of the bacterial infection, viral infection, what kind of environment that we are living. That can cause a lot of trouble, and that can cause these symptoms. Dysbiosis or SIBO. Our stomach has a lot of healthy bacteria and unhealthy bacteria. When the stomach has more unhealthy bacteria or fungus, this is where this is called dysbiosis. And it is one of the critical reasons causing these kids so many issues. The moment we start healing their stomach, their gut, symptoms of hyperactivity, their abilities to comprehend will start increasing just by improving their stomach health. Food intolerance and sensitivities also play a major role, because this can lead to inflammation. Inflammation can go in the brain, and brain inflammation can cause the symptoms. Seizures is one of the reasons, and gluten has a large role to cause inflammation and then seizures. So this is another very, very important thing. Parasitic infection is simple as parasitic infections can also
put the child into trouble. Of course, it's always a multifactorial problem, but there are a bunch of issues in each child. Glutathione is a detoxifying agent in the body. When it becomes low, this is where this problem can increase. Increased toxic burden. Environment is polluted. The food we eating polluted. The air, the water. All of these things are bringing a lot of toxin to our body. If detoxification is impaired, amount of toxins in the body will increase and it start interfering with the mitochondrial function. This is where the problem starts for the child. Genetic, of course, can be a problem, but it's all not always. But of course, if we improve the epigenetics, जो कारण है उसको ठीक कर लेंगे, genetics का भी expression को change हो सकता है. Many times we when we collect details from a parent, they say the child was doing normal development goals. Then they vaccinated, probably for some reason double vaccination happened. This is where the trouble started for the child. Low vitamin D, almost across the board, vitamin D is low in these kids, and this is a big problem. Of course, a mother, if she was deficit onto nutrient, the child will become nutrient deficit, and brain don't get enough nourishment. This is where another problem starts. Prenatal folic acid exposure can also put the child into risk. Now, this has become a very common thing that all the pregnant mothers are given folic acid. It should be methylfolate or folate. But if we give synthetically made folic acid, it can put the child into a big risk. Of course, exposure to radiation, impaired detoxification, mitochondrial function, all these are reasons, right? So it's a very complex and a multifactorial problem. The good news is we can work on these reasons. We can one by one sort these reasons. As a consequence, one by one, the symptoms will start resolving. As a consequence, over a period of time, probably, there's a large possibility a child may become absolutely normal, like nothing happened. So this can be achieved. So where the problem starts. So I think in medicine or in Ayurveda or in all pathies, we always say the problem starts in the gut. If the stomach is not keeping well, body cannot keep well. So if the gut don't have good bacteria, inflammation starts. The inflammation gets into the body and the brain. This leads to the problem. If the stomach is not healthy, you cannot digest the food. You cannot make the food as a part of your body. This will lead to a lot of deficiencies and trouble in the growth. If stomach is not keeping well, there's not enough healthy bacteria. This can lead to a lot of allergies to the foods. That can also be a problem. If stomach is not keeping well, and we take a lot of nonsense food into our body, the amount of toxins, the xenobiotics start accumulating, and they become neurotoxic. They start toxifying the brain. So it all starts in the gut. So if we have to solve this problem, we have to improve the gut. So functional medicine approach is nothing but, finding the reason to the problem. There's a cause and effect. We want to find the cause of the problem. Okay. And there can be multiple reasons behind one diagnosis, because diagnosis largely does not tell you what is going wrong. Diagnosis is always based on the symptoms. But in functional medicine, we dig deeper, find out why there's a problem, and we step-by-step approach, we start solving the problem. As the problem is sorted, the cause, the effect, the symptoms will start coming down. So hope you're clear, what is coming on your way. So now, if we talk about specifics, we are what we eat, okay? Now, if we don't have enough raw materials for our own body, we need macro and micronutrients, right healthy fats, right healthy proteins, minerals, vitamins. If these things are not there in the body, how do we expect the body to function well? So if your child has some deficiencies, how do you expect the child to grow normal? And there's so many deficiencies we find in these children, so many deficiencies. And the moment we start correcting those deficiencies in a very precise way, you will see that child will start improving. Right after that, they'll start improving. Today, we are
eating and feeding our children with lot of genetically modified foods, especially the wheat and the dairy and the soya. Now, these foods look like food, but they're not food. Our human body is not designed for consuming genetically modified foods. Now, what happens when you have a diesel car, you keep feeding petrol to it? You cannot expect the good performance. Similarly, when human body is fed with a lot of nonsense made by humans, not by the nature, problem starts. Okay, your child already has a weaker point, and you fed the wrong food, they will manifest a problem. Similarly, if your child is allergic to certain foods and you still keep feeding those foods, inflammation will go up, inflammation go in the brain, the child will start throwing symptoms. So if we have to solve the problem, we have to make sure deficiencies are corrected. We give the right food to them, not genetically modified. And if any allergies, we take care of them. Second reason, which is very, very common, these kids have a leaky gut. Our intestines are designed to digest the food and take the nutrition into the blood and throw out the waste. Now, when the filter size, the pore size in the intestines become a little bigger, along with the nutrition, bacterial byproducts, a lot of toxic waste, they start getting into the bloodstream, going into the liver, causing a damage to the liver, and eventually they can pass the blood-brain barrier and cause a damage to the brain also. So if the stomach is not keeping well and there's a leaky gut, it could be a big, big trouble for the child. Now, the first thing to solve the brain problem, we have to solve the stomach. Now, what causes this leaky gut? A lot of the food that we feed to our children, especially the gluten proteins that are there into wheat and barley and the rye sometimes, because they can cause something called molecular biomimicry. So the protein that is there into these new hybrid foods, our immune system does not recognize these proteins, and it makes antibodies against the proteins that we take. Now, same antibodies start attacking our own cells, leading to a inflammation within the body because we take some food which is genetically modified food, which our body is not designed for. Now, we are always today, especially after this corona or within the corona period, we are always, in a mode to kill the microbes. We forget that we are living in a symbiotic activity with these microbes. There are trillions of bacteria, viruses, and fungi into our gut. All we have to do is feed the good guys. If we have enough of the good guys into our gut, they will keep us healthy. Now, when we use a lot of antibiotics, we use a lot of hand sanitizers and all antiseptic things, we kill the good guys. When we kill the good guys, the bad guys will grow. Then the bad guys will produce toxic substances and they will make you further sick. So this is called gut-brain axis. Your gut is controlling your brain. Similarly, brain is controlling your gut. So gut is also controlling your brain. A lot of very, very positive things are made into the gut by this bacteria. Now, if you don't have healthy bacteria, you have dysbiosis, your child has dysbiosis, their brain cannot function well. Just like, one simple example, serotonin, majorly serotonin is produced by the gut bacteria. And it is used in the brain also. Now, if the gut is not healthy, brain cannot be healthy. And your child will start throwing a lot of symptoms, a lot of aggression, just because their stomach is not keeping well. Again, to have a healthy digestive system, you need to have a good digestion, also good endocrine system. Cell-to-cell communication should happen. Now, what is that is damaging these systems? Now, I mentioned some of the parents, they report to us, the child was developing normal, then they have some infection or something and antibiotics were given. And just after the antibiotics, probably multiple times antibiotics were given, and after the antibiotics, the child started regressing. They started throwing symptoms, they're having a problem. Because the antibiotic don't know what is a good bacteria, bad bacteria, antibiotic killed the good guys in the gut, dysbiosis started, and that led to a problem. Then what other things could disrupt the digestive system? Could be gluten, could be painkillers, could be steroids, could be high sugar diets.
Now, we today feeding our kids with a lot of sugar, a lot of processed food, a lot of junk food. Now they all look like food, but they are not food. How do we expect the kid to grow well if we are not feeding them well? Similarly, we are using a lot of toxic, household products, body lotion, sunblock, pesticide, plastic, industrial chemical use, meat and dairy products, which is not organic. Now, all are loaded with the toxins, and when the toxins get out in the system, they kill the endocrine system, they kill the cell-to-cell communication. Then how do we expect the body to function well? Another very, very, very critical component of a problem today, which is across the board, again, all of these kids are dehydrated. They are dehydrated at cellular level. And when we ask the parent, is your child drinking enough water? They always say, yes, yes, the child is in fact drinking more than enough water. Child is drinking more than enough water and taking rounds to the washroom every now and then. He is drinking or she is drinking enough water, but this water is not hydrating their cells. Okay, the hydration is not happening at a cellular level because the quality of the water is so poor. The water that we are today drinking is unstructured water. Unstructured water cannot enter the cell membrane, cannot hydrate the cell, cannot take the nutrition into the cell, cannot take the toxin out of the cell. This is where the load starts, and this is where the problem starts. If our body is almost 75 to 80% of water, brain is 80% water, and if body of your child don't have enough water, how do you expect the body to function well? So you always have to find the reason behind the problem. Another very, very toxic thing that we are doing in the society today is exposure to the non-native electromagnetic fields. Now that can be from a laptop, that can be from a mobile phone, that can be from a cellular network, that can be from a television network. We are bombarding our body with a lot of unwanted electromagnetic fields. Now, just to put things into perspective, a 6-year-old child's body, including their brain, absorbs 60% more radio frequency from a cell phone or other wireless devices than a person in their 20s. So child is more exposed to the problem. Now you can imagine, I mentioned 30 years, probably the number of children having this problem was so less. Today it has exponentially grown. Why? Because the amount of technology, amount of radiation these kids are exposed to is much, much larger than we were exposed to. And if we don't fix this problem, if we don't avoid these things, it can damage the neurological system, it can damage the immune system, it can damage cellular health, repair mechanisms, cardiovascular health, of course, the brain function. Now you can connect the dots. What is that is causing a trouble to your child? And in this lockdown also, when the child is not going outside, they're largely staying inside. More and more kids are becoming more hyper and diagnosed with such a problem. Or if there was a problem, the severity of the problem has increased simply because they were in this negative environment. Now, after hearing this new information, ask yourself, is your child body, brain getting everything they need to function optimally, or something is missing? Is something interfering in their ability to function normal? If the mitochondria has to work well, there are toxins, there are radiation, they're not letting the mitochondria to function well. How do you expect the body to function well? Because mitochondria is the engine of the body. So you have to really, really think a little deeper than just being very superficial. You have to think at a cellular level to improve your child's health. So what is that we have to do? If any toxins, we can test them, take them out. If there are any deficiencies in the body, we can correct those deficiencies. Inflammation is certainly a big problem. We can improve their inflammation. We can certainly improve the gut microbiota again. We can feed them good probiotics, kill the bad guys. This is the one essential part of the component. Of course, environmental changes, water changes, food changes. Lot of things we have to do to improve their health. It's not an easy job. It's a very, very complex science. But if we keep doing and right things in a sustainable way,
there will be a time when you will find your child, getting out of the diagnosis. They are no more diagnosed as a problem. And this possibility is a major possibility, and it can happen to almost 80 to 85% of the kids. So you have to be very, very positive and think through, and then implement such changes to your kids. Now, in our experience, every 2 months, every month, we are starting a new batch, and we keep collecting a lot of data from our participants. So within almost 2 months of period, we see the receptive understanding, the speech is improving, sleep patterns are improving. Now, sleep is a big issue into these kids. Now, if the child is not sleeping well, how do you expect the body to recuperate from the stress? Okay, sleep is where we regenerate ourselves. If they're not sleeping well, we cannot think that they can regenerate. Now, when the sleeping improves, it's a big point. The eye contact has improved, stimming, compulsive behavior improve, hyperactivity improve. This now, as mitochondria start functioning well, all the components will start falling into place. And largely in this first 2 months, a major difference we always see into their digestive health. Now, if the digestion becomes healthy, the stomach becomes healthy, the brain has to become healthy. There's no other way around, right? So just to give you some of course, Ayush has taken you through some of the experience from the parents. So some of these are other experiences. A 10-year-old child, we have seen improvement in bowel movement, receptive language, instruction following, speech, and to an extent. Now, all these kids, because of the lockdowns, none of them were able to do any external therapies like OT and behavioral therapy and all that. They were at home and they were following these protocols made for these kids. Largely the diet, largely the food change, largely the environmental change, the water change, the supplementation, the detoxification, the microbiota improvement. So these are very, very simple practices which a person can do at home for the child. And of course, you have to be very, very rigorous, and but you will see a lot of good things. And just another example, 5.5-year-old child diagnosed with ADHD. Now, he showed a lot of interest to singing rhymes. So he says color of his dress. He started to walking sometimes, but sometimes he answers correctly about what he had. So the cognitive abilities improved, their receptibility improved, their speech has improved. Now, of course, today, if we don't do anything about these things and we are just into the wrong direction, we don't take the right direction, it's only 10 to 15% of the cases where we can see a improvement by itself. But 80 to 85% of the chances are there a child can become lifelong into a problem. But if you take a right decision today, you start doing the right things for your child, there's a possibility of 80 to 85% they can become absolutely normal. So now, Ayush, you can take over. Thank you. So before I begin, I'll just throw again. Ayush, you there? Okay, guys, I think probably there's some technical issue with the Ayush. He'll join in back. So meanwhile, if basically Ayush will help you understand about the program, जो भी आपके questions होंगे इनको solve कर लेते हैं. तो तब तक कोई question है तो unmute कर लीजिए तो I can answer your queries. Okay, I can pick up some of the questions from the chat if you like. You can unmute now if you want to ask questions. Yes, sir.
Yes, madam. Yeah, I'm from Qatar actually. Okay. My child, he is having ASD, okay, from mild to moderate. Okay. And I was doing a special diet with him. First of all, I started the name check protocol with Okay. olive oil, fish oil, Mhm. prebiotics. And then he was okay, like he was improving, but he was not well in these days. Okay. So we started antibiotics. It was compulsory to give him antibiotics. So he regressed. His sleep issues are increased. His what improvement was coming. It is there, but it has like sleep is very big problem for him. Right. Right. So that's the case, and I'm doing all the things you are telling, like removing toxins and everything. I'm doing the Right. gut microbiome. For that, I'm using prebiotics, natural probiotics, everything. But the thing is that I think I'm not doing the proper way. So I need your guidance on that. Sure, madam. We will do that. I mean, of course, a And name check is a sir, good what protocol. most important concern is he follows commands. He sits in one place for 1 hour, and that is fine. He's little bit hyperactive and no speech yet. He's 4.8. Right. So let's understand the speech part, which is a big trouble. Why more and more kids are being diagnosed with the speech issues? So now, one thing is for sure is the two parts of the brain. One is focused on the learnings and the visuals. Another part is on the speech. Now, if your child is exposed to a lot of technology, lot of visuals, lot of learnings, they are only developing one part of the brain. If you keep your child with the mobile phone all the time, they will only learn one part of the learnings. One part of the brain becomes more active than the other part. So you really has to stop using the technology unnecessarily. Okay, technology is one of the reasons. Second reason, very critical, is the levels of creatinine is always low. Okay, the levels of protein are always low. When they don't digest food, they don't make the food as a part of their body, they become low on amino acids, and one of the amino acids is creatinine. That is also one of the big reason behind they are not speaking. All right, so we can correct these things, and eventually there arises a possibility of they start speaking. Hello, doctor. Can you hear me? Yeah. Yes, Siddiq, go ahead, please. Yes, brother. My daughter is 16-year-old. So this medicine I will help her. Hello. Okay, so before I can comment on I need to little more understand about your daughter. But Yes. with our approach, I'm sure that every child will be improved. Hello. Please unmute yourself, sir. Hold on. So just one small little request. Siddiq, you can continue with your question, but others, please, one by one, आप अपना hand raise कर दीजिए, and we'll pick up one by one queries, please. Siddiq, please unmute yourself. Dr. Ashwini, please unmute. Yes. Yes, doctor. Yes, sir. Can I ask my question? Yeah. Go ahead. Doctor, you see, my daughter is 15-year-old. Okay, I have been giving occupational therapy now. Just 1 month ago, we started this ABA therapy. Okay, she is showing little bit improvement. Following commands and doing some. So your medicine, this functional medicine, will help her. Certainly, it will help her. Yeah. Great. So, Ms. Payal Priya, then Mr. Ravi Kumar, please ask your question. Hello, sir. Yeah, Ravi ji, please go ahead. सर मेरा 2.5 साल का बच्चा है सर, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता कुछ भी, अभी तक कुछ बोल भी नहीं रहा है, और 1.5 साल भर का था तब से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर से हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कोई फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, इसमें टाइम लगेगा, मतलब 1.5 साल 2 साल करीब, और ये कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, कोई कमांड वगैरह भी फॉलो नहीं करता है। Right, Ravi. So when you say functional, probably they mean there's some nerve issue possibly. Okay, now वही हम बात कर रहे हैं कि
बॉडी को हेल्दी रहने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स का, कुछ राइट एनवायरनमेंट का जरूरत है। इतना यंग बच्चे में कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, उनका नर्व्स को डैमेज क्यों होगा, वो समझना है, वो जानना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे उनका स्टमक ठीक होगा, वैसे वैसे उनका ब्रेन ठीक होगा, वैसे वैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एक मैं इस बीच सब लोगों के बेनिफिट के लिए आई जस्ट शेयर हाउ द प्रोग्राम इज रन, ताकि सब लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाए। सो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स टू द प्रोग्राम। एक ट्रीटमेंट का पार्ट है और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ट्रीटमेंट, वो भी। तो ट्रीटमेंट में द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले तो हम एक बहुत ही डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म भरते हैं। सो देयर आर सम 90 ऑड क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिवली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर चाइल्ड। उसके साथ में सारे आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स यू शेयर विद अस, basis that we do a case analysis and we have to order for certain blood work additionally if required. तो उसका सैंपल आपके घर से ही इकट्ठा होता है, आपको कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, सब घर से ही हो सकता है। इट्स अ टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम। उसकी बेसिस पे एक रूट कॉज एनालिसिस होती है और एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जो एक एक्सप्लेनेटरी कॉल में डॉक्टर अश्विनी एक्सप्लेन्स टू यू, बाकायदा एक 12-14 पन्ने की रिपोर्ट बनती है और उसकी बेसिस पे क्या इश्यूज निकले हैं और एक हाइपोथेसिस किन रास्तों पे चल के उसको ट्रीटमेंट करेंगे या बाहर निकालेंगे बच्चे को प्रॉब्लम से। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। अभी वो आपका ट्रीटमेंट कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, आप डॉक्टर और उनकी सपोर्ट टीम के साथ में लगातार एसोसिएटेड रहते हैं, बिहेवियरल एक्सपर्ट्स वगैरह भी रहते हैं इसमें। तो वो सारी चीजें आपको आप सपोर्ट में मिलती हैं। अब जब आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो 4 चीजों के ऊपर ये प्रोग्राम चलता है। पहला आपका डाइट, दूसरा आपका एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे एग्जांपल डॉक्टर अश्विनी दे रहे हैं। थर्ड इज सप्लीमेंटेशन, जो कमियां हैं उनको पूरा करना होगा। एंड फोर्थ इज देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल थेरेपीज आल्सो फॉर न्यूरल स्टिमुलेशन, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आपको पेरेंटल एजुकेशन की जरूरत है और देयर आर 8 क्लासेस इन दिस प्रोग्राम फॉर पेरेंटल एजुकेशन। जो सवाल आपके हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है आपके बच्चे के लिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर 4 क्लासेस व्हिच हैपन इन द फर्स्ट मंथ। 2 क्लासेस यानी बाईवीकली क्लासेस होती है मंथ 2 और मंथ 3 में। सो फर्स्ट फ्लोर क्लासेस आर फिक्स्ड व्हिच आर रूट कॉजेज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये जो लिखा है, ये 4 क्लासेस होती है। जनरली ये वीकेंड्स की तरफ होती हैं, शाम को 7 बजे होती हैं। रिकॉर्डिंग और सब कुछ आपको मिलता ही है। इसके अलावा एक पर्सनलाइज सपोर्ट भी आपके साथ में रहता है लगातार रीअलाइनमेंट करने के लिए। द आइडिया इज, फंक्शनल मेडिसिन में जरूरी है कि आप बच्चे की प्रोग्रेस कॉन्स्टेंटली शेयर करते रहें डॉक्टर सपोर्ट टीम के साथ में, ताकि पहले महीने में हम इलाज पे पकड़ बना पाए और दूसरे और तीसरे महीने में कुछ रिजल्ट्स लाके आपको दिखा पाए। तो उस हिसाब से ये रहता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन अचीव, वो सब आप लोगों ने देखा ही था पहले। ये बेसिकली ये जो आपने चार्ट देखा है, ये परसेंटेज में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज समवेयर अराउंड 45-46% बच्चों को एट एन एवरेज इसमें इंप्रूवमेंट मिला है। करीबन 67-68% को गट बिहेवियर में इंप्रूवमेंट मिला है। इट्स लाइक दैट इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ 2 months। तो उस तरह से रहता है। प्लस यू ऑल्सो मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स, डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ सभी एक साथ रहते हैं, ताकि एक दूसरे की कॉन्स्टेंटली मदद कर सके। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 16,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 2 days पूरे ट्रीटमेंट के लिए। फुल कॉस्ट इसकी 20,000 है। अगर आप 1 by 1 करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। 1 month के लिए 8,000, बट देन द कॉस्ट बिकम्स फुल फॉर द नेक्स्ट 2 months इट वुड बी 12,000। सो दैट्स अप टू यू। There is also an educational part which is also very, very important for parents. Those who are skeptical, they can start with a 7,000 rupee 3-month ka plan to at least start with diet, nutritional, environmental changes, and then you can later on, renew for a full treatment plan later on by paying the difference. तो इस तरह से चीजें रहती हैं। The program is beginning on 4th of September and there are all kinds of payment methodologies. वो सब आपको शेयर करेंगे। But it's more about taking your questions in. We'll come back to the questions. ये डिटेल में बाद में समझ लेंगे। Payal, if you are there, please, if you can ask your question. Okay, we'll go to the next one. Miss Julie Rani Sharma and Mr. Manoj Verma. आप हैं अगर तो please unmute yourself and ask your questions.
जिन लोगों को इंटरेस्ट है प्रोग्राम Hi, में या this is कुछ, Ranbir Sharma. हाँ जी बोलिए सर. Are you getting my voice? या. Hello. This side is Ranbir Sharma. I am husband of Julie Rani Sharma. Actually मेरे बच्चे का एज 5 years हो चुका है और अभी मैं ये 2-3 साल से उसके ट्रीटमेंट के बाद अभी फाइनली मैं एम्स में गया हूँ उसकी ट्रीटमेंट के लिए. वहाँ मुझे 2 फाइंड आउट किए गए कि एक तो उन्होंने जेनेटिक प्रॉब्लम बताया बच्चे का और दूसरा उन्होंने क्या कि आपके बच्चे में थायराइड की भी प्रॉब्लम है. मैं रूट कॉजेज जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये दोनों, क्योंकि एडीएचडी का प्रॉब्लम है, अभी तक स्पीच क्लियर नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, हाइपर एक्टिव है. हेलो. हाँ जी समझ पा रहे जी, बताइए. हाँ जी सर. तो मैं थोड़ा सा इसके लिए चिंतित. मैं बात समझ गया. देखिए, इट्स अ इजी पीजी थिंग फॉर अस डॉक्टर्स टू से जेनेटिक है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, आप घूमते रहो पूरा इधर उधर, है ना. मजा तब आता है जब वी स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डीपर देन द नेम ऑफ दिस जेनेटिक्स. ओके, जेनेटिक है तो मतलब कुछ भी, बस फिर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा समझा दिया जाता है. थायराइड को भी जेनेटिक बता दिया जाता है. कैन यू इमेजिन दैट? सो मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स, जो भी हम पेशेंट नहीं कहूंगा, किड्स, पेशेंट हैज बिकम अ नेगेटिव टर्म टुडे. बहुत लोगों में, बहुत बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है बहुत यंग एज में. थायराइड का फंक्शन उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब थायराइड का फंक्शन कम क्यों हो गया ये समझ लीजिए. मेरा ग्लैंड है, उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए हार्मोन बनाने के लिए. इसको भी तो फ्यूल चाहिए. उसका फ्यूल क्या है? बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, 6, 7, 9, 12, जिंक, मैग्नीशियम, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, सिलेनियम, आयोडीन. ओके, अगर बच्चे में कोई चीज की कमी है, ग्लैंड काम नहीं करेगा. ग्लैंड काम नहीं करेगा तो ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा. एक चीज हो गया. एडीएचडी हाइपर एक्टिविटी है. हाइपर एक्टिविटी क्यों हो सकता है? उनका स्टमक अगर अच्छा नहीं रहता, स्टमक में कुछ बैड बैक्टीरिया है, वो कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जिससे उनका सेरोटोनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा. डोपामाइन का जो डिसइंटीग्रेशन होता है डोपामाइन का, वो हो नहीं पाता है, इसलिए वो अप रहता है, जिसके चलते वो हाइपर रहते हैं. जैसे जैसे उनका स्टमक को हेल्दी करेंगे, अच्छा बैक्टीरिया को उनके अंदर डालेंगे, खराब बैक्टीरिया को किल कर देंगे, उनका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो होने लगता है. वैसे वैसे उनका हाइपर एक्टिविटी कम होने लगता है. दूसरा है इन्फ्लेमेशन. जैसे आपको चोट लग गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग इज इन्फ्लेमेशन. वैसा इन्फ्लेमेशन ब्रेन में रहता है. जैसे से उनका खाना चेंज करेंगे, स्टमक को ठीक करेंगे, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा, वैसे भी उसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आने लगेगा. सर मेरा एक हेलो, मैं डिस्टर्ब करने, मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चे में है कि मैंने इम्प्रूवमेंट देखा तो इसकी इंटेलेक्चुअल लेवल कोई कम नहीं है. जैसे कुछ मोबाइल या कोई और भी एक्टिविटी जिससे कराऊं तो सारा का सारा वो कर लेता है, बस स्पीच में भी तक कोई भी एग्जैक्टली. तो मैंने अभी आपको यही इसी प्रेजेंटेशन में एक चीज बताया था कि ब्रेन के 2 पार्ट हैं. एक पार्ट विजुअल्स के ऊपर डिपेंड होता है, विजुअल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा स्पीच के ऊपर है. अगर आपका बच्चा हमेशा मोबाइल फोन के साथ है, उनका इंटरेक्शन विजुअली ज्यादा हो रहा है, उनका एक पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है रेदर देन द सेकंड वन वेयर स्पीच इज देयर. ओके, तो टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर इज मेकिंग देम स्पीचलेस. तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कम करोगे, अपना लाइटिंग को इम्प्रूव करोगे, वैसे वैसे उनका दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन विल आल्सो, नथिंग रॉन्ग विद देम. हमने जैसा इन्वायरमेंट दिया वैसे उनका आउटकम देने लगे बच्चे. लेकिन जैसे हम उनको इन्वायरमेंट अच्छा दे देंगे, टेक्नोलॉजी को हटा देंगे, उनका स्पीच पे वापस आ जाएगा. ओके, सो इट्स नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम. ओके सर, आपकी जो फंक्शनल है कि मेडिसिन में इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली थेरेपी में है कि क्या होगा, या फंक्शनल मेडिसिन है क्या? हाँ चलिए, ये तो अच्छा क्वेश्चन किया. है क्या? किसी भी बीमारी का एक कारण है. मैं सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज ऑटिज्म इज ADHD इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. डायबिटीज को समझ लेते हैं. आपका ब्लड शुगर ऊपर हो गया, ठीक है, अंग्रेजी दवाई में, एलोपैथी में क्या करेंगे, ब्लड शुगर को कम करने के लिए आपको मेडिसिन दिया जाएगा. लेकिन वो बढ़ा क्यों, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, बस उसको कम करने की दवाई दी जाएगी. अब कम करने का क्या होता है, या तो इंसुलिन बढ़ा दिया जाता है जिसको सेंसिटिविटी को लेके,
अगर हम फंक्शनल साइड से उसको देखते हैं, अगर इंसुलिन बढ़ गया बॉडी में तब भी शुगर बढ़ जाता है, अगर इंसुलिन कम हो गया तब भी शुगर बढ़ जाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन बढ़ा है जिसके चलते ब्लड शुगर ज्यादा है, या कम है जिसके चलते, तो हम उसको करेक्ट करेंगे रेदर देन फोर्सफुली ब्रिंगिंग द ब्लड शुगर डाउन। तो हम कारण के ऊपर काम करते हैं, सिम्टम अपने से चला जाएगा अगर कारण को सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर कारण बना रहेगा सिम्टम लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। सप्रेस करोगे फिर आ जाएगा, सप्रेस करोगे फिर आ जाएगा। ये फंक्शनल मेडिसिन है, कारण को सॉल्व करने की way of solving the problem. I'll just want to Thank you, add a sir. little bit. देखिए, दो हिस्से हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी से। एलोपैथी में जो बहुत अच्छी चीज है वो है हम प्रूफ या प्रमाण के ऊपर चलते हैं, विच इज रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट क्या कहते हैं, तमाम तरह की डायग्नोस्टिक्स क्या कहती है। सो बेसिस डायग्नोसिस वी कम टू अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नाउ द ग्रेट पार्ट अबाउट आयुर्वेद, naturopathy, homeopathy, whatever pathy it is, all these holistic treatments, they are trying to look at the root cause. But the problem with all these methodologies is that they are very very individual dependent. वो इंडिविजुअल कितना अच्छा नाड़ी परीक्षण करता है या कितना अच्छा होम्योपैथ आपसे आपकी प्रॉब्लम समझ पाता है, उसके ऊपर उसके ट्रीटमेंट की कैपेबिलिटी डिपेंड करती है। नाउ फंक्शनल मेडिसिन इज अगेन अ वेस्टर्नाइज्ड प्रोसेस। इसके इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो इंडिया के बाहर है। हिंदुस्तान में देयर आर नॉट मोर देन 70, 80, 90 फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स, जो सारी पढ़ाई ट्रेनिंग बाहर होती है, और वो ट्रेनिंग इस पे होती है कि रूट कॉजेज कैसे समझें, बायोकेमिकल पाथवेज को कैसे समझें। अगर हाइपर एक्टिविटी है तो उसके पीछे कारण क्या है, उस चीज के पीछे कारण क्या है। जब तक रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे, जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फंक्शनल मेडिसिन प्रोवाइड्स देम टूल थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कि उस रूट कॉज पे कैसे पहुंचे और उसको ट्रीट कैसे करें होलिस्टिक मेथोलॉजी से। डाइट वगैरह के चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, सप्लीमेंटेशन के चेंजेस जो बॉडी खुद नेचुरली बनाती है, वो सप्लीमेंट्स देना ताकि किसी तरह के साइड इफेक्ट्स ना आए, और बॉडी को हम क्षमता दें अपनी इंटरनल लड़ाई खुद लड़ने के लिए, ताकि कैपेबिलिटी नेचुरली बने बॉडी की, और वो प्रॉब्लम से बच्चा हो या बड़ा हो, किसी और तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो उससे बाहर आ सके permanently. So that is what functional medicine is. It is not about the medicine part of it. The functional part of functional medicine is a little more important. कि functionality क्या है, root cause क्या है, जो problem है उसका root cause क्या है। Medicine could be anything. So for example, Dr. Ashwini is an allopathic doctor. बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, अगर ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एलोपैथिक मेडिसिन आल्सो कुड बी यूज्ड, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम इट। सप्लीमेंटेशंस वुड बी प्राइमरी फोकस, उससे पहले भी एनवायरमेंटल चेंजेस, उससे पहले भी डाइटरी चेंजेस, जरूरत पड़ी तो होम्योपैथी भी। सो द मेथोलॉजी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फाइंडिंग द रीजन इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेयर द पावर और कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच इज। ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, मिस्टर शाश्वत Madival Venkatesan, sir, if you're there, please unmute yourself, ask your question. Yeah. Sir, good evening, sir. Yeah, go ahead, sir. Sir, I am speaking from Hyderabad, sir. Go ahead, sir. Yes. Sir, मेरा बेटा का एज 13 साल है, सर, 13 years. Yeah, go ahead. वहाँ बाय बर्थ ही ऑटिज्म है, सर, बाय बर्थ ही। तो उसको मैंने जस्ट 1 year में मैंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने वहाँ यहाँ बताया, सर, कुछ स्पीच थेरेपी वगैरह किया है, तो उसको हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि लड़का अभी 13 years में है, तो स्टिल मतलब बाय बर्थ वो बात नहीं कर सकता, और सभी प्रकार का बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है उसको। स्पेशली वो ही कांट टॉक, कुछ बात नहीं करता, पुकारता है, ऐसा करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एज में अभी भी हम कुछ करने के चांसेस है या नहीं? प्लीज यू एडवाइज मी, सर। राइट, अभी भी कंडीशन। हाँ जी वेंकटेश जी, देखिए एक चीज समझने की है कि अपना बॉडी हमेशा रीजनरेट करते रहता है। नथिंग इज परमानेंट हियर। Every 6 days you get a new stomach lining. Every 2 months you get a new liver. Similarly, every 8 to 10 months your nervous tissues will also change.
ओके, Yes, तो sir. कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो होते रहता है. आई कैन नॉट से कि पूरा 100% हो जाएगा, नहीं होगा. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, but there's always a possibility to improve the health, improve the symptoms. तो जितना symptom improve होगा उतना life easy होता जाएगा. And Yes, sir. in many cases we have seen complete reversal भी हो सकता है, but मैं आपके बच्चे के केस में ऐसा 100% तो दावा नहीं करूंगा, लेकिन improvement is certain. Okay. सर अभी टोटली बच्चा 0% भी बोल नहीं सकता, तो उसके स्पीच में कम से कम कुछ हद तक हम उसको ला सकते हैं. मेरा हाँ देखिए सर, लॉन्ग वेंकट जी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मैंने कहा कि 8 to 9 months लगता है ब्रेन को नया टिश्यू आने में. ओल्ड सेल्स विल डाई, न्यू सेल्स विल कम. ऐसा प्रोसेस है, बॉडी में होता रहता है. नथिंग इज परमानेंट. सो दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. ब्रेन का फंक्शन चेंज होता जाएगा, उसका एबिलिटीज चेंज होता जाएगा. So if we put enough effort, and there's so many things we can do, you know, there's one thing we do on the physical body, that is unka diet, unka nourishment, unka inflammation, that is one part. Then there's a very, very beautiful thing that can be done, is a microcurrent therapy. That is, every cell has a voltage. तो जब वो वोल्टेज कम होता है तो फंक्शन सेल नहीं कर पाता है. तो देयर आर डिवाइसेस व्हिच कैन इंप्रूव द वोल्टेज ऑफ द सेल, जिससे उसका कैपेबिलिटी बढ़ जाता है. Then there are quantum healing, energy healing devices also available. So lot of things can be done for these kids. But again, it's unfair for me to comment कि ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा. But I am certain कि improvement जो हम देखते हैं अपने बच्चों में, improvement जरूर आएगा. अगर आप लगे रहे, if you are committed, probably you will see a lot of good things. Sure. Sir. One doubt, sir. Please, sir. One doubt. सर लड़के को जो पसंदीदा चीजें होती है उसके ऊपर 100% कंसंट्रेशन करेगा. जिसको जो चीजें पसंद नहीं है उसके ऊपर वह कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं करेगा. सर फॉर एग्जांपल, अगर रास्ते पर जा रहा है बच्चा, अगर कोई व्हीकल आता है उसका कुछ भी केयर नहीं करेगा, लेकिन उसको जो खाने की चीजें होती है उसके ऊपर ज्यादा, जहां पर डिब्बा रखे हैं, जहां पर बिस्किट रखे हैं, उसके ऊपर ऑन द स्पॉट जाकर लड़का उसको ला सकता है. अगर वही कंसंट्रेशन दूसरे पर नहीं रख सकता, ये क्या है सर? ये मतलब एक तरफ ऐसा है क्योंकि माइंड तो एक ही है, लेकिन दोनों टू साइड्स, हाउ कैन ही वन साइड ही complete concentration, one side not at all concentration. Right, sir. अगर just to give you a very nasty example, शराबी को शराबी अच्छी लगती है और उसका ही फोकस रहेगा उसको. तो ये बच्चों में क्या हो जाता है कि there are certain foods that we are feeding ourselves. मैंने कहा genetically modified foods हैं. जो गेहूं है आज, उसका एडिक्शन हो जाता है. दूध का एडिक्शन हो जाता है, शुगर का एडिक्शन हो जाता है. ओके, सिमिलरली कुरकुरे में कुछ ऐसी चीज डाला है जिसका एडिक्शन हो जाता है. They deliberately add certain things which cause addiction. Now when the child is addicted not to a drug but to a food, they will only look for that only, what they are addicted for. Right? इसमें थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से और ऐड करना चाहूंगा फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड आल्सो फॉर यू मधुबल जी. सो सी द पॉइंट इज, ऑटिस्टिक बच्चों की अपनी खुद की दुनिया होती है. और ऑटिस्टिक बच्चा जो भी होता है, मतलब कोई भी इंसान सर्वाइवल के लिए काम करता है. हम लोगों की सर्वाइवल में एक और चीज हो गई है सोशल एक्सेप्टेंस. सोशली हम लोगों को लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें अपने नेचर में, इसमें उसमें सब में बदलाव करते रहते हैं. पीपल हु हैव a decent level of cognitive ability. अब किसी सरवाइव करने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत है: खाना, पीना, सोना और एक समय के बाद में सेक्स. These 4 or 5 things are essential for a human being to survive, basically, to meet the basic instincts. Now, once these things are met, there is no reason to be excited about anything else. And that is how the world works for an autistic child, because he is any which way protected. He or she is any which way protected. तो आप सब provide कर रहे हैं as parents for him or her, and you need to, because he does not have the capability to get it on his own, be self-dependent and all of that as of now. तो वो जो 3-4 चीजें जहां से मीट हो रही हैं उसके लिए तो झगड़ा है, बाकी चीजों की कोई परवाह नहीं. Yes, sir. बाकी चीजों की कोई परवाह नहीं है. This is how the mind works. अब वही चीज को बदलने के लिए, अब वो ऐसा क्यों है और बाकी लोगों की तरह से क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग के कुछ सेंटर्स डेवलप नहीं हुए हैं. वो सेंटर्स डेवलप क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके डेवलपमेंट में ब्लॉकेजेस हैं.
खुराक नहीं मिल रही, या pathways blocked हैं, या many other things, you know, it's a very complex process. तो वो जो processes हैं वो कहाँ अटकी पड़ी हुई हैं, उनको अगर हम जांच करके एक ठीक तरीके से identify कर पाएंगे, then we can definitely resolve them, whether it is speech or whether it is anything else, behavioral patterns or whatever it is. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can I ask? Yes, go ahead, please. Sir, ये एक Thank जो है you. ना, Thank you, sir. No problem. Go ahead. सर एक थेरापिस्ट है, वो हमको जो है ना एक एडवाइस करी कि बच्चे को जो है ना प्री बर्थ एक्सरसाइजेस बोल के, वो पैर को ऐसा करना जो बच्चा माँ के पेट में करता है, तो ये बच्चे जो है ना माँ के पेट में नहीं करते ये एक्सरसाइजेस, तो इनको ये प्री बर्थ एक्सरसाइज कराइए, और ये बैपकिन रिफ्लेक्स बोल के, और ये जो है ना बैक वार्मर बोल के, ये जो एक्सरसाइजेस करा रहे उन्होंने, ये बॉम्बे में रहते हैं, डॉक्टर रीना बोल के ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है। तो सर ये थेरापिस्ट कुछ काम आते हैं ये आगे चल के बच्चों पे, कुछ ये आपको कुछ इस पे एक्सपीरियंस है, या फिर ये क्योंकि हम तो अननेसेसरी पैसा दे रहे हैं इधर उधर, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। देखिए सर, एक चीज समझने की है, मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ ने तो कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं किया था, और आप सब पैदा हुए थे तो कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं, एंड वी आर नॉर्मल। ओके, अगर प्रॉब्लम है फॉलिक एसिड की, एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा क्या? प्रॉब्लम है प्रोटीन की, एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा? माँ के एक्सरसाइज में माँ ने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाया, एक्सरसाइज से पूरा हो जाएगा क्या? सो जो जिसको आता है वो बोलता रहता है। Okay, so we are not saying this is wrong, this is right, this is good, or this is bad, but we have to use logic. Okay, कि भाई अगर रेडिएशन से बच्चे में प्रॉब्लम आ गया, एक्सरसाइज उसको अनडू कैसे करेंगे? Yes. Right, so we just has to see, staying healthy is also a lot of things body needs. Exercise is one part, not the essential part, it's just one part. Yeah. Those of you who have queries जो solve ना हो पाए हो, आपको जाना हो या whatever it is, या अभी भी कुछ बचे हो, please make sure that you leave your phone numbers so that we can reach out to you. अगर आपका program One last question, is it possible I can? No, we'll take all the questions, don't worry, the session is going to last for a very long time. So so those who have interest or those who have queries, please make sure that you drop your phone numbers so that we can connect to you at a later stage, and make sure that you are responding to the polls also. Ms. Alaya, please go on. Yes, sir. I already told I stay in Qatar. So your program first, it will be like case analysis and all those things. And you will do testing, right? For Right. heavy metals and toxins for that. So how will I do that here? So we, Qatar, there are parents who have joined in from Qatar, ma'am, in the past. So there are three possibilities. So A, we, depending upon, you know, whether when you are joining, etc., and basis the tests that are required, through our lab partners here, we might be able to identify a potential lab partner there and get it done for you locally. That is one possibility. The other possibility is that you can find a local lab, which people have been able to find in the past, and get the test done at your own end. And we'll assist you in all ways possible. The third possibility is, in case you are having any trouble in finding a local person and the lab partnership also does not work out, we can very well send you the dry kit, and you can drop the stool and urine samples for the child and ship it back to us, and all the analysis could be done. So all these three possibilities are there. People in the past have joined in from Qatar, from UAE, Dubai, of course, Abu Dhabi, etc. Abu Dhabi is a bigger challenge than Qatar, by the way, but Abu Dhabi is also very much possible. Australia, New Zealand, several other places, Middle East, Singapore, and all of that. So that's not a problem at all. Don't worry about that. Yeah, I have one question. Go ahead, please. या एक्चुअली मेरे बेबी का इश्यूज है कि उसको सीजर्स आते हैं, तो एमआरआई में उसको मतलब डायग्नोसिस हुआ है कि उसको इशू है माइंड में लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से उसको स्पीच नहीं है, थोड़ा सा बिहेवियर इश्यूज हैं, वी आर नॉट श्योर। तो मतलब इसमें भी बेनिफिशियल फॉर हिम दिस इशू बिकॉज़ वी डोंट नो रूट कॉज क्यों हुआ, कैसे हुआ। राइट सो सीजर्स आर क्वाइट अ कॉमन थिंग विद दीस किड्स। 20-30% केसेस में रहता है सीजर्स का प्रॉब्लम। और सीजर आता क्यों है?
I have been talking about inflammation. Inflammation जब body में बढ़ता है तो brain में भी आ जाता है eventually. The inflammation in the brain will lead to the seizures. Now, inflammation आने के बहुत सारे कारण हैं. खाना है, environment है, bacteria है, toxins है, deficiencies है, पानी का कमी है. As we correct these things, उनका inflammation कम होगा और उनका जो seizures का frequency है वो कम होगा. And there will be a time जब वो seizure free भी हो सकते हैं. Okay, actually birth के time की injury है as per doctors. So देखिए ऐसा है कि मैं भी उसी I'm belonging to the same faculty. okay. जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं कुछ तो बता दूंगा आपको. agree. But this is the way of practice. क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है तो I will say ताकि आपका मन रुक जाए, आप बस उसको मान के चल लो. मन तो देखिए डायबिटीज एक एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया. सिंपल है तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. लेकिन आधी दुनिया डायबिटिक हो चुकी है और किसी डॉक्टर के पास आंसर नहीं है उसका. क्या करेंगे? Agree. Right. So ऐसा ही है. This is how the system is, but we have to get out of the system. If I was in the system still, I would be seeing the same things. कि भाई जेनेटिक है, बर्थ से है, कुछ नहीं हो सकता है वैसा वैसा. But see, life is not. हम लोग कोई मशीन नहीं है. There's something called quantum physics or quantum medicine. You know, हम लोग fixed नहीं है. We are always changing. Based on the energies around us, based on the planets that are around us, based on the things around us, people around us. So many things are influencing us. So if we don't speak about it, does not mean that it does not happen, right? So we just have to do the right things for the child. And of course, is every possibility a child can become healthy and normal again. Okay. Thank you. Yeah, please go ahead. Good evening, both of you. You are audible. Is it Pooja? Yes, sir. Myself, Pooja Patil. थोड़ा सा तेज बोले मैम, आपकी आवाज आ तो रही है, थोड़ी धीमी है बस. Okay. Now I am audible. Yeah, go ahead. Okay. So I have two kids. One is of 8 years. My elder one is of 8 years, and younger one is of 4 years. My elder son is diagnosed autistic. Actually, to be very frank, after 8 years also, I'm not pretty sure whether he is autistic or ADHD, because nobody has confirmed that he's the case of ADHD or autism. And my younger son is pretty normal, very normal. अब प्रॉब्लम क्या है कि वही जैसे आप लोगों ने बोला कि whether it is by birth or the problem was कि मैंने जो ये वर्ड सुना है ऑटिज्म, ये मैंने तभी सुना है जब मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक कहा गया. तो पहले तो आइडिया नहीं था. तो फॉर मी माय चाइल्ड इज प्रीटी नॉर्मल, ही इज डूइंग वेल. 11 मंथ्स में उसने अपना चलना स्टार्ट कर दिया था. ही स्पीक्स माँ पापा ये सब चीज करता था. आई एज्यूम दैट इट इज प्रीटी नॉर्मल. आई कांटेक्ट मुझे नॉर्मल लगता था. चीजें पता बाद में चली तो ज्यादा ध्यान बाद में देखना शुरू हुआ कि आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पर मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था तो मुझे लगा कि ठीक है. देन वन डे ही मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट, थोड़ा सा पैर मुड़ गया तो उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ. आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड स्पीकिंग. तो तब तक भी आइडिया नहीं था. वी थॉट कि चलो शायद चोट लग गई है, वो थोड़ा सा परेशान मतलब बढ़ गया है. तो इस तरह से समय निकलता गया ना. इन 2.5 and 3 years जब वो पहुंचा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया. ही सेड ही कुड बी अ केस ऑफ एड्स. हमें ये बताया गया कि ये केस हो सकता है, बट नोबडी वाज श्योर. बोला गया आप इसे प्ले ग्रुप में भेजिए, ये सब करिए, एंड वी ट्राइड एवरीथिंग बट ही कुडंट कम अप. वही चीजें फिर लगा नहीं कि इम्प्रूवमेंट कुछ इतना अच्छा हो पा रहा है. देन जैसे आप डाइट चार्ट की बात करें सर, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. मैंने डाइट के ऊपर भी काम किया है, बट आई एम नॉट जस्ट, मैं उस अकॉर्डिंग का इम्प्रूवमेंट उस पर नहीं देख पाई. अब क्योंकि मेरा बेटा खाता ही सिर्फ रोटी था, मैंने वो भी काफी लंबा समय तक छोड़ा, पर कुछ क्योंकि नहीं हुआ तो आई स्टार्टेड विद दैट रोटी वाला पार्ट. मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया. दूध मेरा बेटा, डेयरी प्रोडक्ट मेरा बेटा आज भी नहीं लेता है. वो छूट गया है तो छूट गया है. तो वही सब चीजें हैं कि आई हैव ट्राइड समथिंग जो आप लोगों ने बताया. हो सकता है कि उतना करेक्ट वे में ना हुआ हो. अब
मुझे सबसे ज्यादा इशू लगता है कि क्योंकि वो जजमेंट जो मेरा बेटे का है कि वो मैम ऑटिस्टिक है कि एडियाटिक। पूजा जी एक छोटी सी हाँ जी, रिक्वेस्ट है, यस सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि और भी बहुत लोगों के यस सर, सवाल हैं। आई नो, बस आई एम जस्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ कि वो जो आप क्वेश्चन यार आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आप ये सब चीजें करोगे, माइट बी कि मैं उतना करेक्ट आंसर, क्योंकि वो जजमेंट वाला प्रॉब्लम है कि मेरे को नहीं मालूम है, आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो कितना करेक्ट होगा, या और वो क्योंकि आपका ऑनलाइन मतलब के थ्रू ही चलना है, कोई फिजिकल हमारी मीटिंग तो है नहीं, तो मुझे कितना हेल्प आउट कर पाएगा, मेरा क्वेश्चन मेनली ये है। बिकॉज हम तो डील करेंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन इन्हीं सेशंस के थ्रू, तो वो मुझे कितना हेल्प कर पाएगा। राइट पूजा, तो देखिए एक चीज है कि हम लोग डायग्नोसिस को नहीं ठीक कर रहे हैं। डायग्नोसिस इज अ क्लब ऑफ सिम्टम्स। ओके, जब हम सिम्टम कलेक्शन करेंगे, सिम्टम कैन बी फ्रॉम द स्टमक, सिम्टम कैन बी फ्रॉम द ब्रेन, कैन बी फ्रॉम द स्किन, कैन बी फ्रॉम द एलर्जीज, नोज, ईयर, आईज, व्हाटएवर, ऑल द सिम्टम्स विल बी कलेक्टेड, स्लीप, है ना। तो हमको सिम्टम्स ठीक करने वैसे वैसे डायग्नोसिस श्रिंक होने लगेगा। Okay, so I do understand what you are trying to. yes, second is you don't worry whether you are able to judge that or not. You as a mother is the best judge for your child. Okay, you don't need any objective justification for it कि आपका बच्चा नॉर्मल है नहीं है। अगर आप सोचते हो नॉर्मल तो नॉर्मल है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तकलीफें हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। सो ऐसा कोई देयर इज नो हार्ड वे टू फाइंड आउट। मैं भी अगर किसी को डायग्नोस करने बैठूंगा, आई विल यूज ऑन माय सब्जेक्टिविटी। आप अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करोगे, कोई थर्ड बंदा अपनी सब्जेक्टिविटी यूज करेगा, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट? एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी एबल टू improve, that can happen. Exactly, no fine sir, actually you are working on a root cause, but you should know the means आप if you are going to find out the root cause, you should know कि मैं किसका लिए root cause ढूंढ रहा हूँ। Actually, you people are saying that we are working on a root cause. So when you are working on a root cause, you should know कि मैं किस प्रॉब्लम के लिए root cause को ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो आपको जब हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आप तो कुछ लिखोगे ना उसके अंदर? हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि वो चीजें मुझे मतलब मेरा ठीक है फाइन, मेरा जजमेंट अब वही, उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी, मैं आपको और बाकी सारे पेरेंट्स का भी ये सवाल होगा, उन सभी लोगों को जवाब दे देता हूँ। प्रोग्राम किस तरह से चलता है और कैसे ये पता चलेगा। सबसे पहला स्टेप है, जब आप एनरोल करते हैं तो आप एक बहुत ही डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म भरेंगे, जिसमें तकरीबन 90 सवाल होते हैं, और ऑब्जेक्टिवली जो आप कहना चाह रहे हैं बच्चे के बारे में वो सारी जानकारी ली जाएगी। उसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे पेरेंट्स को भरने के लिए, और वो आप ठीक तरह से भर पाए उसके लिए यू वुड गेट टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, you'll get a phone number as well as you'll get an email ID to share all your tests and reports right from birth till now. उसकी बेसिस पे केस एनालिसिस होगी और फर्दर ब्लड टेस्ट ऑर्डर करे जा सकते हैं, जो कि फर्दर बच्चे के बारे में जो एडिशनल जानकारी लेनी है वो जानकारी लेने के लिए हमारी मदद करेंगे। उसका होम सैंपल घर से इकट्ठा किया जाएगा, उसकी बेसिस पे पूरी पिक्चर कंप्लीट होगी, और रूट कॉज एनालिसिस उसके बाद में पिक्चर में आएगी। तो तब रूट कॉज एनालिसिस होगी और एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा, जो आपको समझाया भी जाएगा कि भाई ये 12, 14, 15 प्रॉब्लम्स निकली हैं बच्चे में, और एक हाइपोथेसिस बनती है कि इस सिस्टम से अगर चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी, और सिम्टम्स जैसे कि स्पीच ना होना, या हाइपर एक्टिविटी होना, या रिसेप्टिवनेस ना होना, फाइन मोटर स्किल्स ना होना, मैथ्स ना कर पाना, एंड सो ऑन, उसके पीछे के कारण के पीछे हम जा पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये पूरा प्रोग्राम रहता है 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट। एक डाइटरी चेंजेस, दूसरे एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी पानी कौन सा चले, लाइट कैसी रहे, साउंड कैसी रहे, बच्चे के साथ में आपके इंटरेक्शंस कैसे हों, और ऐसी 50 चीजें। उन सारी चीजों की एजुकेशन के लिए कि आप सही से इंप्लीमेंट कर पाएं, इसमें क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस हर हफ्ते पहले महीने में होगी, और 4 और क्लासेस यानी बाईवीकली सेशन मंथ 2 और मंथ 3 में, ताकि आप सीख पाए कि इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है। अब उसके बाद में तीसरा हिस्सा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि सारे पेरेंट्स, हो सकता है डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ भी पूरी तरह से आपको समझ के आपकी हेल्प ना कर पाए, वहां पे पेरेंटल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पेरेंटल कम्युनिटी का मतलब ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का ग्रुप, जितने भी पेरेंट्स हैं वो एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ के साथ में,
ताकि डेली बेसिस पे जो आपकी क्वेरीज हैं वो सब आपस में एक दूसरे की रिजॉल्व कर पाए और एक दूसरे की मदद से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे जा पाए। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आप ठीक तरीके से कर पाए। अब एक डाइट रहती है, एनवायरमेंटल चेंजेस, सप्लीमेंटेशन जो आपके रूट कॉज एनालिसिस की बेसिस पे निकलेंगे ताकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, बॉडी को केपेबल बना सके अपना नरिशमेंट, अपनी लड़ाई, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए। और चौथा, कुछ इंटरनल थेरेपीज भी होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। अब देखिए, माइक्रो करंट थेरेपी, स्केलर एनर्जी, काफी लोग बायोमेट से कंपेयर करते हैं। बायोमेट का काफी लोगों ने इलाज करा रखा होगा या सोच रहे होंगे, तो बायोमेट में ये सारे ऑप्शंस नहीं रहते हैं और पर्सनलाइजेशन भी नहीं होता है। वो प्रैक्टिशनर डिपेंडेंट, जो करना है उसने करना है बंदे ने, उसी तरह से जैसे आयुर्वेद में या होम्योपैथ वगैरह में रहता है। तो कई बार बायोमेट के ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होते हैं उसी वजह से। तो देर आर सो मेनी थेरेपीज सच एज स्केलर, माइक्रो करंट, साउंड थेरेपी, देर आर सो मेनी अदर थेरेपीज ऑल्सो जो इसका हिस्सा रहती हैं। इसके साथ में लाइट कैसी रहे, डिटॉक्स लगातार बच्चे का होता रहे, डाइट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल, सभी चीजों के प्रिसिशन के साथ में ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज रन। आई होप काफी सारे लोगों का सवाल था कि प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। इज देयर एनीबडी हु इज स्टिल नॉट श्योर अबाउट हाउ द प्रोग्राम इज रन? प्लीज टाइप इन यस इफ प्रोग्राम के बारे में क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। Please type in no if program is clear now. Okay, neither yes nor no. Okay, so it is clear, I suppose. Preeti ji, मैं आपको, आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए. We'll reach out to you and we'll guide you individually. Thank you so much. Can we take next questions? Miss Anurit, Miss Naved is there. So Naved ji, aap here, and then Miss Anurit. Naved Masood here. Ji, please go ahead. Thank you very much for your time. I understand this is something good coming up, like after a long follow-ups with at multiple sources. Or I just need to understand this. My question regarding the overall your program only. That's why I wrote yes. I don't know why it didn't reach you. My question is, what I understood from the overall program until now, that you will be getting some blood tests done, looking at some specific markers for the overall gut health, and then accordingly some supplements would be provided, or supplements would be provided first of all, or just the names and we will need to get it from somewhere. This first question. Okay, so Naveed, yes, we will, for example, if you're in India, we give you Amazon links from India. If you're outside India, we'll give you Amazon links from outside India. We will not be selling you or sending you anything. We as a doctors will only helping prepare the plan, and rest is, a support will tell you how to get, what to get, how much to give, all that details, but we will not be giving you anything per se. Okay, thank you. I got it. You will be just prescribing them, and we'll arrange it from somewhere because they must be commonly available, isn't it? Yes, these are OTC drugs. आपको e-commerce platforms पे usually मिल जाती हैं. In case you are struggling for whatever reason, then we can ship it across. But the idea is, I mean, this program is not about selling products, is what my point is. So the idea is to guide and nurture and nudge parents in the right direction so that they can become their own doctors and mentors for their children. Yeah, I got it. That's not my point of discussion. Okay, you will be prescribing and you will be getting it. Another thing, these therapies that you have, just now we saw them therapies, water, charged water, things like this. I mean to say, are these available in New Delhi? Yes, I mean, of course, apart from the, the nourishment, the food, the other things, the special therapies like microcurrent therapy, there are devices available for these things. And if the need comes in and you are able to get those things, these can be made available. Yes. Oh, thank you very much. And this is already included overall analysis, and Absolutely. The prescriptions are
available in this program as has been discussed. That is correct. So all of these things would be there in the program. Yeah, Dr. Anurit, please go ahead. Thank you. I suppose Naved, your question is answered, I hope. Thank you very much, done. Thank you. Yeah, Anurit, please go ahead. Anurit, you need to unmute yourself to ask your question, please. हम अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं जिसे ADHD बताया गया है, स्कूल वालों ने तो बताया था हाइपर एक्टिविटी। जब हम यहाँ पास में डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सीजोफ्रेनिया नाम की बताई कि इसे आपके बच्चे को सीजोफ्रेनिया है। हमने लगभग 1.5 साल वो दवाई पड़ोस में भी परेशान नहीं करता। जब दवाई बंद करते उसके बाद फिर परेशान करना चालू कर दिया। उसके बाद फिर हमें किसी ने बताया कि आप दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर के पास एक हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर अमिताभ शाह, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। जब हमने उन्हें दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को जो बीमारी बताई गई है वो बीमारी नहीं है, ऐसे ये तो ADHD का शिकार है। Okay, so we can pick up the next question. The person with the name Realme 8 5G, Preeti Khurana and Mr. Pandarinath. Hi. Hi, this is Preeti. May I ask the question? I'm in a queue. Yeah. Go ahead, Preeti. Please go ahead. Yeah. Hi. Actually, I'm from Australia, and my daughter has been diagnosed with ASD level 2 from last 1 year. Like my GP raised the red flag for her. So we, since then, it's a part of, getting acknowledged, being a parent, your child is having it, and slowly we see the pediatrician here, specialist here. He diagnosed her. So I have been going through a lot of social groups like the naturopathy, who follows the naturopathy, and a lot of mothers out there all over the world who said yes, they have seen a lot of improvements in the kids following the naturopathy programs, the one you guys are also recommending, gluten-free, sugar-free diets and toxic-free diets. So I have just recently started doing that. But being an Indian background, it's so hard to remove the dairy and wheat. So my question is can I be a part of your program living in Australia, and how can I be part of your program, doing all those tests and all that stuff? Second is in your plan, will it be do we get all the dietary changes, the diet plans properly, which exclude gluten-free and sugar-free? Because sometimes it's really hard to find living in here, the products which are gluten-free and sugar-free from the Indian kind of menu. And my question is regarding that from Australian food, I'm giving a lot of food, fiber rich and all that stuff, but still so thoda sa wo restrictions is still there, we cook Indian food, so usme wheat or dairy. I got the question. Yes, आपको रेसिपी मिलेगा, आपको प्रोडक्ट्स का लिस्ट मिलेगा जो आपको चाहिए, and I can tell you outside India you get better products than in India. Of course, in the Indian stores there's a much high availability of good quality products, so that should not be a problem at all. And yes, you can join from Australia, that should not be an issue. I think time gap भी ज़्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ, so we have had participation from Australia in the past also, ma'am. So yeah, I've heard you said it before, but मेरा वही है कि वो blood test अगर करना भी होगा या कुछ भी होगा तो how can it be? Is it okay to be a part of it? तो हो जाएगा वो? Yes, we will help you get all these things. जो अब कुछ locally हो जाएगा, कुछ kids के through हो जाता है, कुछ we can arrange all these things. My GP is very good. मेरा हमारे जो general practitioner है वहाँ पे, he's very good. He's also from Indian background. He'll gonna help me out as well. Fantastic. But I need a proper guidance. Sure. That is, we will certainly be doing that. Okay. And I'm pretty much hopeful actually is gluten-free or sugar-free diet को लेके, as far as I have but आपको heard. बहुत देखिए, I want to tell parents कि it's not a piece of cake. Okay. Yes. आप लोगों को I know. बच्चे के लिए करना है. It is not for anybody Yes, else. I And have to. if you do it, you will get the outcomes. Hopefully.
No, no, Okay, 100%, fine. 100%. You should be very, very positive. I'm actually hopefully, because I'm following a lot of social groups where mothers are actually following this this kind of diet. So anyhow, how can we connect again? Like, we get the messages from you through WhatsApp and all that stuff, or You can share your phone numbers in the group chat. You can double click onto our name, Yellow Scotch, and you can share privately as well. Okay. Or else you can, it doesn't really matter. Nobody is going to spam you. So you share your numbers. We'll No, get it's in okay. touch. We'll get in touch with you and take it forward. No problem. Okay, fine. Thank you. I'm sharing my number in this same group. Okay. Yeah. Fine. And meanwhile, we are also sharing our number with you. So anybody who has any concerns or want to reach out to us, you can. So 9717 655. Sure. Thank you so much. So just to answer Anupreet, ठीक है, different diagnosis को किसी ने ADHD बता दी, किसी ने schizophrenia बता दिया. Schizophrenia के पीछे भी कारण वही रहते हैं. Okay, और diagnosis change होते रहता है. It is not always the same thing. अलग-अलग symptoms के हिसाब से अलग-अलग brackets में डाल दिया जाता है. But at the end of the day, important क्या है? कारण को ढूंढना, उसको solve करना. तो schizophrenia भी अगर by chance किसी ने diagnose, उसको भी solve किया जा सकता है. सर परेशान बहुत करता है, चीजों की तोड़फोड़ बहुत करता है, खाने पीने की चीज बिस्किट वगैरह कोई चीज नहीं छोटा, जितना मिल जाए उतना कम है. वो ठीक है अनुप्रीत, मैं समझ गया, लेकिन ऑल आई एम सेइंग कि अगर हम स्ट्रिक्टली चीजें करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो दे विल बी अ टाइम दैट दे कैन improve and change and get better and free of diagnosis. That's a outcome that we are looking for. तो वो जो मैम आप अनुरीत जी आप कह रहे हो ना, ये बाकी पेरेंट्स का भी रहता है कि बच्चे को कंट्रोल कैसे करें, डायरेक्ट कैसे करें डाइट को लेकर. तो उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे कि मठरी हुई फॉर एग्जांपल, या बिस्किट्स हुए, या चॉकलेट्स हुए, या मीठा कुछ हुआ एटसेट्रा, ऑल, या दूध रहा, दूध या दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स लोगों की बहुत कंसर्न्स होती हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट्स, और वो ऑल्टरनेट्स आपको रेसिपी के तौर पे भी और इंडिविजुअल गाइडेंस के तौर पे भी, जिसकी जो एडिक्शन हो उस हिसाब से डायरेक्ट भी किया जाएगा, गाइड भी किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर. देयर इज अ सेपरेट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट जो कि आपको ग्रुप में लगातार एडवाइस करते रहेंगे जैसे जैसे आपके कंसर्न्स होंगे. इसीलिए एक ग्रुप बनाया गया कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा हो, जहां पे दिक्कत आ रही हो, आप पूछें और आपको रियल टाइम एडवाइजरी मिल पाएगी. तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है. तो वो जो भी आदतें लगी होती हैं बच्चों को, वो इसलिए होती हैं कि ये बच्चे की खुद की शायद जरूरत ना हो, उसके अंदर जो पैरासाइटिक या फंगल इन्फेक्शंस हैं उनकी जरूरत है या उनकी भूख है. तो पीछे पड़ के अगर एक एडिक्ट की तरह से किसी खाने के पीछे अगर कोई बच्चा पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्लियर है, और वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान बन जाता है, और सॉल्व करना ये एक मेहनत का काम है, समय भी लगता है, लेकिन वो डायरेक्शन पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है परमानेंटली. जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डायग्नोसिस फ्री बनाया जा सकता है. अगेन, पर्सन विद द नेम Realme 8 5G, Seema Shashwat, if you are there, please unmute yourself and ask your questions. Yeah, Shashwat, go ahead. You are unmuted. Ask your question. Yeah, hi sir. Thanks for this session. And actually, I have multiple questions right now, but just starting with one, that what is the percentage of getting corrected of this disorder meanwhile? मैं बता देता हूँ आपको. एक सेकंड. Like my child is 3-year-old. Yeah. हाँ, रुकिए, मैं आपको जो एक्चुअल नंबर्स हैं हमारे, वो मैं शेयर कर देता हूँ, एंड विल गिव यू अ गुड पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स आर. सो ये जो आप देख रहे हैं ना चार्ट, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर ट्रैक कर रहे होते हैं. सो स्पीच और रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग. सो दिस सेंटर पार्ट इज, इफ this is 100 and this is 0, so it is around 46-47% of children, they have been able to recover by this much percentage at an average within a 2-month span. इसी तरह के तरीके से स्टिमिंग इज स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर.
एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, Yes, yes, ऐसे चटकाना या जो भी हो, किसी का हैंड क्लैपिंग, किसी का कुछ, दैट थिंग कंपल्सिव बिहेवियर। जो अनुरीत बोल रही है, अनुरीत जो आप कह रहे हो ना, किसी एक चीज के पीछे पड़ के जबरदस्ती वो करना है, तो उसमें तकरीबन अराउंड आई थिंक दिस इज 38 39 और मे बी 40 41% ऑफ रिकवरी। जीआई इंप्रूवमेंट्स, कॉन्स्टिपेशन कुछ पेरेंट्स ने बोला कि रहता है, बचपन से रहा है एंड सो ऑन, सो एनीवेयर बिटवीन 64 65 66% ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसी तरह से मोटर मूवमेंट्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सुई में धागा डालना या खाने की प्लेट पकड़ना, दैट्स द डिफरेंस। तो उसमें भी इस तरह से इंप्रूवमेंट आया। सो आई कांटेक्ट अगर आप देखेंगे तो मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव बीन एबल टू, आई मीन द रिकवरी हैज बीन मोर देन हाफ. So Okay. this is how. So, but in this program, one more thing I just as I was just through this session right now, that for particular time stances, we have to get in the touch with the assistants there, or they will call us and just get in touch with us. We can get in touch with you. You can share your phone numbers. Otherwise, you can also get in touch with us. We have shared our phone numbers as well multiple times. So I can share that again. That doesn't matter. So in fact, my number is 9717 333 655. So you can get in touch with us on this number. So you can reach out to me specifically. Okay, that will be great. And sir, one more question that I have right now, I think that will be better answered from Misha there. That he said that the mobile using and the what about the screen time and the radiations about that mobile network. These are our basic, I think, one of the most hazardous cause of this autism or that ADHD. But meanwhile, I think this disease, or no, not to say that disease, this is the disorder, it is happening from very long time. Like I just gone through the net and I searched it out. Like there was Anthony Hopkins, Einstein, and Susan. There was so many of the very what to say that well recognized persons are there who was. मैं आपको और ज़्यादा दिखा देता हूँ. Yeah. So this is 1812. They were got just this disorder, but at that time the mobile and this all were not so much developed, and the radiation was also not at this particular level like we have from last 5 years. This is a multifactorial problem. Probably what the time frame you are talking about, hardly one child out of thousands would be diagnosed. Today, one child out of 150 is being diagnosed. Okay, so then you can connect the dots. Autism sir, जब so हम might means शाश्वत जी, मैं एक छोटा सा वो दूं, जब हम छोटे थे तो उस समय हमारे घरों के आसपास मेरे ख्याल से स्पेशल नीड्स वाले जो स्कूल हुआ करते थे शहरों में, वो 1 या 2 होते थे बड़े शहरों में. अब मैं आगरा से हूँ और आगरा में स्पेशल नीड्स के तकरीबन 250 स्कूल हैं. बिल्कुल जी. तो आगरा में 250 स्कूल्स हैं स्पेशल नीड्स के. तो वो जो आप कोरिलेशन करेंगे तो मतलब ऐसे एक फैक्टर नहीं है, खाना पीना भी है, पानी भी है, कैसे जी रहे हैं, फ्लैटों में ऊपर छत पे टंग के जी रहे हैं, सनलाइट से कटे हुए जी रहे हैं, पानी कैसा आ रहा है वो पाइपों में भर के हमें कुछ पता नहीं है. तो मतलब ये और गैजेट से घिरे हुए हैं. ये अभी जो हम काम कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से, ये भी हमारे लिए नेगेटिव ही है. तो कम से कम डॉक्टर अश्विनी रेडियो में बैठे हुए हैं, तो वो अपना माइक्रोवेव बचा के बैठे हुए हैं थोड़ा सा. ये भी एक सीख है. तो ना the point is the blue light exposure, the kind of food, the kind of water, the kind of mobile exposure, जो 10,000 वॉट की हमारी लाइन चलती हैं, ट्रेन्स की वजह से जो रेडिएशन, सभी चीजें हैं, फैक्टर नहीं है. दूसरा है, I think whatever every bit of thing that I have spoken about, you know, there's evidence to it. I'm not making these things up. I'm just putting the pieces of the puzzle together. Okay. As an individual research saying that EMF is bad, individual research saying that blue light is bad, there's individual research saying that poor quality water is bad. I have collated things together and put a program together. So I hope the question is answered. And fine, I think sir. Yes, sir. I have just only 2 more doubts, out of which I will ask only one. That I think this program is just comprised of some what about the supplements are not based on the medicines. I think it is. Is it? There is a correction of diet in it?
Four things in the program. One is dietary changes. Second is environmental changes. The kind of light, sound, water, all of those things. Your interactions with the child and so on. Everything. Environment of the child. The third thing is about supplementations to enable the body naturally to fight internal ailments and overcome whatever deficiencies and insufficiencies. And point number 4. There are a bunch of internal therapies which could be very useful. It's not necessary for every child to have those therapies, but some children would qualify for certain therapies, and it would be good for certain others, certain different kinds of therapies. वो सारी neural stimulation के लिए internal therapies हैं, तो वो भी आपको सजेस्ट करी जाएंगी और एक्सपोज करी जाएंगी, एंड वील शो यू द पाथ ऑन विच थ्रू विच आप खुद ही वो घर में रहकर अपने आप कर पाएंगे. So that is also, these 4 things are there in the program. Sir, just only my last doubt is that do these type of children have a tendency that not to eat and they got forced to make them feed about or to eat, because we really found it very difficult to make them eat and to make them feed, like वो कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं. We have to force him out. ये बहुत सारे बच्चों के साथ में ये कॉमन चीजें होती हैं कि वो खाना नहीं चाहते हैं, वो 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं अगर नहीं खिलाओगे तो. ये बहुत कॉमन है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 2 या 3 टाइप के ही खाने खाएंगे. कुछ कलर उनको पसंद है खाने के, कुछ टेक्सचर पसंद है, बस वही खाएंगे, और वो भी खाएंगे चबा के नहीं, निगल जाएंगे पूरा का पूरा. राइट, एब्सोल्युटली. तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चों में. आई थिंक इजीली अराउंड 20-25% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, स्पेशली इन द यंगर एज, दे हैव दीज कंडीशंस. इसके पीछे भी कारण है, और वो कारण रिजॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स ओवरकम कर पाते हैं. Okay, fine. That's great, sir. Thanks. जी. शैलेंद्र जी, आपका सवाल है. सीमा जी, you can unmute yourself and ask your question, please. Mr. Shailendra, Miss Meena. Yes, sir. Good evening. इस बार तो थोड़ा टाइम ज्यादा चला भी गया है. I am making myself very short. Sir, 2 things are there. ये जो functional medicine का approach that you have suggested we all the participants, and इसमें ये कहा गया कि definitely there would be some kind of lab tests like blood test or whatever kind of test. So will it be convenient for you to collect all the samples from all where? हाँ सर, वो लैब की चिंता ना करें. ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही ग्रोन अप इंडस्ट्री है. बहुत तगड़ा नेटवर्क है लैब पार्टनर्स का. नहीं, लैब पार्टनर तो ठीक है सर, बट यू नो कि these children are, most of the children are either hypersensitive or hyperactive or these kind of children, to collect the sample from them easily or to ये challenge. This is rightly pointed out, and this is one challenge. So we try our best to identify the person who is having an experience. We do work with you. Sometimes it can become a challenge, little bit of a challenge. So we do work with you individually on the person who is going to collect the sample to a certain extent. पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लैब पार्टनर्स के कंट्रोल में रहता है. So we do help out in that case. अगर आपको challenges आते हैं और वो बंदा नहीं कर पाता है सैंपल ठीक तरह से कलेक्ट, then we switch on to stool and urine samples. Okay, stool and urine sample is also that is also a possibility. और वो आप खुद भी कर पाएंगे बेसिकली. वो चीज तो सर बिल्कुल ये अच्छा है, यही मुझे जानना था. और एक चीज बस सर कि rest of the thing would be part of the program when we will join the program, and when program will go on, many of the things will come across. But one thing I think कि water का तो कोई solution ही नहीं होगा सर. मतलब all people are getting water from RO water, and these all RO are connected to a water tank, and there is water for many days. अगर हम लोगों के पास में सोल्यूशन नहीं होता तो हम प्रोग्राम ही नहीं कर पाते. Okay. ठीक है. So we will. We wish. One more question. Yes, sir. Just let the person be answered fully. And sir, one last thing. Before entering into program, where you are saying it will start around 4 September, or when the samples will be collected and all that. लेकिन उसके नहीं वैसा नहीं. एक सेकंड, सारे पेरेंट्स के लिए 4th को कुछ नहीं शुरू हो रहा है. 4th को पहली क्लास है. That's all. प्रोग्राम आपको आज से शुरू करना है. आज से शुरू करिए. The moment we complete the formalities,
उसी के साथ ही आपको फॉर्म मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह सर के वो लिए। फी स्ट्रक्चर का कोई पीडीएफ या किसी चीज वो का आपको कोई एक वो total आपको PDF? मिलेगा सर। आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिए, विल रीच Okay, आउट sir. टू यू, और हम आपको आप लोगों से शेयर करेंगे। वो जी, ग्रुप sir. में नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड, वो प्रोग्राम का पार्ट होते नहीं है, सो दे स्टार्ट बिल्कुल सर। थिंकिंग अबाउट टू मेनी थिंग्स। तो बस एक सर लास्ट सवाल, चूंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जब तक हम प्रोग्राम में आते हैं, टिल वी स्टार्ट द प्रोग्राम, बिफोर दैट एज पर योर सजेशंस और एज पर द वेरी अदर एडवाइसेस, हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों का ना डाइटरी पैटर्न अभी से ही चेंज कर लिया। लाइक थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री देने का, थोड़ा चॉकलेट से दूर रखने का, डेयरी प्रोडक्ट्स को दूर रखने का, और किनोवा एंड ऑल दैट, रागी वागी व्हाटएवर यूज करने लगे। तो इससे क्या टेस्ट पे, तो जो टेस्ट का जो डिक्लेरेशन आएगा या जो टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, वो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो ठीक है सर, जो प्रेजेंट सिचुएशन में मालूम चल जाएगा उसके हिसाब से आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो अच्छा चीज है। नहीं, चूंकि कंस्टिपेशन का इशू रिजॉल्व होने के पहले, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं नहीं सर, अपने उसका चिंता नहीं करना, जहां स्टार्ट करेंगे वहां से ही अपने को डेटा आएगा, उस डेटा के हिसाब से आगे का प्लानिंग किया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। व्हाट्सएप ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, तो कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, रिकॉर्डिंग चाहिए, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर देयर, एंड प्लीज प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए ब्रोशर एटसेट्रा, अगेन अगर आप लोग लैपटॉप पे हैं तो वील शेयर हियर एंड यू कैन डाउनलोड, बट वो मोबाइल में कैपेबिलिटी नहीं है, सो वील बी शेयरिंग इंडिविजुअली, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर इन अ ग्रुप। कादम्बरी जी, मिस पूजा, सीमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा बेटा है 10 साल का, 10 इयर्स ओल्ड है, और उसको ऑटिज्म के लिए मतलब मैं जानना चाह रही हूँ। 2 साल के एज से ही हम लोग जो भी नोन जिस तरीके की चीजें पता चली, हम लोग उसके पीछे गए, वो जो भी था सप्लीमेंट्स, ओटी, थेरेपीज वगैरह सारे। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जब हम लोग ये डाइटरी चेंजेस वगैरह की तरफ गए हैं, तो हमें काफी इम्प्रूवमेंट तो मिली है। जैसे 6-7 इयर्स के एज तक वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, सेल्फ इंजीरियस एटीट्यूड्स थे उसके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व हुई। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अभी जैसे 1.5-2 साल से मैं इसके सारे डाइट्स मैंने कंट्रोल किए हुए हैं, मैं ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, सोया फ्री, कॉर्न फ्री वगैरह। सप्लीमेंट्स को लेके मेरे एक डाउट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नेचुरल थिंग, मतलब नेचुरल खाने से ही वो ही सबसे बड़ा सप्लीमेंट होता है, और ये जो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में जो चीजें देते हैं बॉडी एब्जॉर्ब उतनी अच्छे तरीके से नहीं करती है। तो फिर जैसे ये जो रूट काउजेस के बाद जो भी चीज निकल के आती है, तो फिर हम लोग कैसे उसको दूर कर सकते हैं, जैसे डेफिशिएंसी और ये सब। राइट सीमा, सो आई गॉट द क्वेश्चन नाउ। जो लोग जिसका जितना समझ है उतना अगला वो अपना they make their comments. Okay, for example, B complex, large part of it is made by the bacteria in the gut. आपने खाना खाया, उसने बैक्टीरिया के उसने ऊपर काम करना है और उसको कन्वर्शन करना है। अगर आपके स्टमक में अच्छा बैक्टीरिया, यू डोंट मेक B9, B12, लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स। तो अगर नहीं बन पा रहा है तो सप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा? कहाँ से नहीं आएगा तो डेफिशिएंसीज बना रहेगा, प्रॉब्लम बना रहेगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं रूट काउज को क्लियर करेंगे, तो नहीं बन पा रहा है तो फिर ये भी चीज होगी ना कि बन क्यों नहीं पा रहा है। Exactly. So let me answer that question. I said you need good bacteria, you need good food and good digestion. Both has to be corrected. In the process हम आपको पहला चीज से मैं ये कह रहा हूँ कि डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना ही अपने को। We have to improve. I am not saying supplementation are for life. Supplementation is a support system. Till the time a body needs support system, we give the support. जब उसका जरूरत खत्म हो जाएगा, उनका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बच्चा खाना खिला रहे हो, खाना बॉडी को लग रहा है, this is where we can stop the supplements. काफी लोग प्रोग्राम में प्रोसीड करना चाह रहे हैं, so I will share the link. Nidhi, can we share the link with people to register for the program, please? Sure. Supplements are recommended. Sure.
Miss Kadambari and Miss Pooja, please unmute yourself. Ask your question, ma'am. Hi. Yes, sir. Good evening, sir. Kadambari. Okay, you talk first. कोई बात नहीं. I'll wait. It's okay. It's okay. Yes, sir. Sir, my question is, can we give camel milk to autism children? I think अगर fresh camel milk मिल जाता है तो दे सकते हैं. Okay. No, for all children, it works or it depends on the disability. देखिए ऐसा है कि चीज समझने के मिल्क को लेके भारत में सिचुएशन ऐसा है, अगर हम x अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इस कंट्री में, 3x हम कंज्यूम करते हैं. मल्टीपल टाइम्स ऑफ द मिल्क दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड. तो ये मिल्क कहाँ से आ रहा है? लोग घर पे बैठे मिल्क बना रहे हैं. ओके, so milk, it's not by its nature could have been bad, but the processing that is done on the milk is bad. Pasteurization makes the milk bad. Plastic packaging of the milk can make bad. Hybridization of the cows can make the milk bad. Lack of the good bacteria in the gut can make indigestibility and can make the milk bad. So there are so many reasons behind. So as a part of the process, मुझे लगता है कि अगर अपने को हेल्दी रहना है, आज के समय पे अपने बच्चों को हेल्दी रहना है, तो doesn't matter what is the diagnosis, खराब चीजों को बंद करना है. Right. There is another question by Ms. Alaya on Fiji water. I think I'm not very sure about it, but again, any bottled water is a dead water. पानी में electrons होना चाहिए. Basically, let's understand this way. We want to improve the redox potential of the body. Redox मान तो negative charge, mean to how many electrons are there to support the oxidative processes. Okay. अच्छा पानी में enough electrons होना चाहिए. When the water is still water, is a bottled water. Doesn't matter what is the source of the water. पानी अगर still है, it's negative water. वो उसमें इतना electrons नहीं है, redox नहीं है, उसमें net ORP नहीं है. ओके. हाँ, अगर आप वहां जाके फ्रेश वाटर कलेक्ट कर पाएंगे उस लेक से, उस झरने से, उस नदी से, तो yes, it is a good thing. So that way, something we have to understand fundamentally about water. It is about the ability of the water to give you extra electrons. और जितना वो फ्रेश होगा उतना अच्छा रहेगा. Okay. Any other questions? You can unmute yourself and ask your questions, please. Okay, I'll talk now. This is Kadambari. I have 2-3 questions. So पहली बात तो ये है कि my baby is 3 years 3 months old and वो उसे ABCD और 1 2 3 4 आता है, but वो बोलता नहीं है. So because उसको आता है, I don't know, there is a crazy obsession. If I take him down to the garden, he will run to the car park, look at the parking. If I take him, the elevator has numbers. कोई दूध का कार्टन आया, उसके ऊपर लिखा होता है. मतलब anywhere, anything that is written, he will keep looking at it. He will clench his fists, his body, and he will start screaming. And he can scream the whole day like that. मैं चीजें बस छुपाती रहती हूँ उससे. So is this normal behavior, and can it? I'm sure it's not normal, but can this also be cured? Am I the only person dealing with it? I'm very confused. Okay, so I think different kids might have different manifestations. So yes, most of the kids, they cry, they scream, they cry, a lot of things, but I haven't heard any child looking at numbers and screaming. Possibly they want to say something they're not able to say. But yes, the other part of the question, whether they can be helped, yes, I believe they can be helped to a greater extent. Okay, so the second question is that like I have been, so I'm a little confused about naturopathy. I term it as maybe Ayurvedic, patte and everything. I don't understand naturopathy. I think that's what it must be.
There was somebody who has who has a child who has progressed very well and the child had autism for a very long time. In Delhi, she advised me something called a bottle of Jesh, then some Ayurvedic concoction which is NeuroSmart, and I gave it to my child. And once I gave it to my child, he was terrible. He was screaming, he was shouting, he was crying, he was constipated. I tried for a couple of days and I got back. I said, forget it. Essay better. So, is it the same kind of treatment? I'm sorry. Right. Kadambari, just to understand, it's a complex problem. And no one solution can solve the problem. Okay. Yes. इसीलिए हम कब से from the beginning we are saying we have to do lot of things. Okay. We have to improve their diet. We have to improve their lifestyle. We have to improve their lighting. We have to improve their water. Then comes the role of probiotics. Then comes the role of antibiotics. Then comes the role of fungal infections. Then comes the role of nutraceuticals. So many things has to be done. Just one, if we say take this pill or take this concoction and it'll solve, doesn't work. It's not that simple. Okay. All right. So you're based from Bombay? I am in Bangalore, but yes, this program will be done online. So it doesn't matter where you are. It still holds good. All right. Perfect. Thank you so much, doctor. Thank you. Any other person, any other questions? So you make sure that you have responded to Kamakshi, you want to ask something? Okay. A question. Yes, sir, I have a question. Right. My daughter is 5.5 years old. She has speech issues. And while checking with one of my friends' reference at homeopathy doctor, like he diagnosed with her tonsils also. Like she swallows food. Then speech issues also. Is it okay to put her in a normal school, like normal? Now she is into UKG. Is it okay for them to go in a normal school? So I think this is a question probably we cannot answer. This is something that you have to decide based on the capability. Having tonsillitis or having, at the end of the day, what we are saying, we can help the child speak better. Okay. Or bring back the speeches. It's not happening. That's what our intention. But in terms of schooling, I used to have a better answer. No, I think schooling is something wherein there are multitudes of factors. Basis my experience, it also depends the kind of area the school is, how supportive the teacher are, the kind of and how accommodative the school infrastructure or their philosophy is towards children with special needs. So that is far more important than most other things. If the teachers are accommodative, every place is a heaven. Or on the other flip side, it could be a hell. So it is your choice how you perceive, how ready you think your child is, and basically how accommodative the school and the entire vibe is. Okay, sir. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Thank you. Make sure that your child does not feel suffocated, because I do remember my brother has also gone to a normal school at some point when he was not ready for it. It was not a very healthy experience for him. So it's not something that you should hurry up. You should be, he and you, all of you should be very, very prepared. And it's also not very healthy for normal children in his class as well. They don't know how to react. For example, people with autistic children, a lot of you guys, you have yourself said कि पहली बार सुना ऑटिज्म कोई चीज होती है, तो जिनके घर में ऑटिज्म नहीं है वो कैसे रिएक्ट करेंगे आप? You can imagine yourself, and they are children, no? They don't know how to react. So it can go negative as well. आपको देखिए ना बिना आती लोग, पता है आपको?
Okay. Anybody else? Any other questions? We are wrapping up the session. सारी details आप लोगों के साथ में WhatsApp group में भी share करी जाएंगी. I mean, we are not going to share payment and those kind of things. Other than that, आप अपना please phone number share करिए, and we'll reach out to you. Make sure that you respond to the polls so to enable us to reach out to you. Those who have mentioned no, not for me in the poll, we would not be reaching out to you. तो अगर किसी का जवाब चेंज हुआ है इस बीच डिस्कशन के बीच, then make sure that you have shared your phone numbers with us, and hope to see you all on 4th. कोई सवाल हो? हाँ, by the way, just make sure you have clearly understood that the program is not beginning on 4th. आप जितनी जल्दी करेंगे उतना आप टाइम सेव कर पाएंगे, and it helps basically. So all your testing and everything and treatment plan would be ready by the time you join in the program. All right. Okay, guys. Thank you so much. Have a good evening. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you, Nidhi. Right. So, others, any other question? No, thank you so much, Mr. All right. Yeah, we Naveed, we will be sharing individually. Group mein, there are a lot of negative reactions, and honestly, we are tired of answering individuals. So how you will be knowing the phone number exactly? So I have shared my phone number. You can mention that you want somebody to reach out to you or whatever your query is on in the group, and we'll definitely reach out. Abhi number dobara share kiya hai, 9717333655. That's my number actually. You can reach out to me, and if you have shared your number here, we have your number, so we'll definitely call you. Polls mein या कहीं पे भी आपने अपना वो किया है तो we'll make sure that we'll call you. Don't worry. Yeah, I'm writing it right now. So, so sir, I have one more question. Sorry. What? Sorry. Like regarding the school only again. Now there is no school open at all. While she is going into nursery, she learned something. So I am a bit confused, like whether I can take her to the next level, or do I have to wait till her speech is good? So this is only confusing for me. No, you for specialists, step by step, everything. You can't plan ahead because hopefully if things do work out, the progress could be quite fast, and plans don't help actually at the end of the day. So I mean, we can plan whatever we need to, etc. But at the end of the day, your child needs to be comfortable. अब इतना ज़्यादा bullying को लेके, so for bullying there is so much of extra additional awareness, in my opinion. Is way too much of it. The level of bullying can be very insensitive for special children, and they also don't know that gets into their subconscious as well. So bedwetting, etc., could be a reason of bullying, or I mean anything. Them start. They can. So, for example, my brother, he started something like this, right? And he did this so much that he cut all his fingers by doing this. So that is because of teasing and everything, and he didn't know how to express it. So that's how it is. So please be careful. Please don't plan way too ahead. You know your child, you know how the environment is. The people should be accommodative. It's much, 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 much better than how it used to be about 20, 25, 30 years back. So yes, I mean, things are better. But then that's how it is. So my answer is, let's plan for about 3 months, 6 months, like that. Not too far ahead. Okay, sir. Okay, thank you. Right. What literature do you suggest? What books? There would be enough. Dr. Nehan, I think you are interested in the theory part of it. So there are enough literature and material we are going to share and so on. So for functional medicine, as well as the approach, and as well as how do you understand the biochemistry internally and microbiome and its role,
gut-brain axis, blood-brain barrier, and things like that. All of this we will be giving. We encourage everyone, all parents, to read on their own and sort of question our methodologies also. I understand, ma'am. Oh, sir, I don't know. Dr. Nian is a first name or a last name, I don't know. So, so all of this would be covered, and all we encourage debate basically. So counterpoints or counter intuitions, even all of this is encouraged. 3-year-old, and my husband is a pediatrician. We want to know the books to know about my son's situation. If you're planning to join the program, it would be covered there. Otherwise, you can. I can help you get connected with Dr. Ashwini if that helps. So just share your number or call me. Basically, simple as that. Right. And I think, all right, fair enough. So I'll end the polls, we'll end the session, and we'll love to see you very, very soon in our program. Good luck to all you parents. Thank you. Thank you for your time.